equal parts. हो गया पहला वाला point. So I know how many parts I need to divide each quadrant into. Then step 2. Step 2 was how many loops am I going to have? So can you tell me here, given curve is going to have how many loops? If n is even, how many loops are we going to have? Twice. Yes. So just twice of 2. What am I going to have? 4. 4. Yes. Okay. So jitna chahiye utna hi likhna hai. No need of writing the procedure with n. You already have the value of n here is 2. So just go on replacing it. So given curve has 4 equal loops. Okay. So we know now how many loops are we going to draw for the curve. Then step 3. Where is the position of the first loop going to be? So if it is cos, where am I going to place the first loop? Initial line. Yes, first loop lie across initial line. Okay, so in short लिखना है जो लगता है उतना ही लिखना है. No need of writing the entire procedure for even, odd, what. Okay, and then step 4. Where am I going to place the remaining loops? Now that depends on even or odd n. Here you can see my n is even. So how am I going to draw the remaining loops? Draw loops in? Consecutive sector. Every Yes. consecutive sector. In every consecutive sector. Yes. In every consecutive sector. And finally, we know that R max is going to be, R max will be A here. Okay. If suppose I replace A by 5. So what is R max going to be? 5. Yes or no? R max will be 5 in that case. अगर मैंने बस 5 cos 2 theta दे दिया मतलब क्या हो जाएगा? R max मतलब cos का maximum value is 1. So R का maximum value क्या हो जाएगा? 5. Okay. 5. So this was the curve given to you. I am given you R is equal to 5 cos 2 theta. मतलब A को मैंने एक value दे दिया arbitrary value. So this is what these are the conclusions that we have. And now we are going to trace the curve. So you will have 2 marks. If it is for 5 marks, 2 marks for writing down this procedure. Okay, and I'll give you 3 marks for tracing the curve. Now look here carefully what all are required. When you trace the curve, students are only drawing the curve and leaving. No radial lines, nothing. So when I'm giving you 3 marks, what is expected is you mark all the radial lines properly. Okay, so first of all, you know this is theta equal to 0. What is this? Theta equal to pi by 2. This is theta equal to pi, and this is theta equal to 3 pi by 2. Okay, now first point, divide each quadrant into 2 equal parts. So I'll be dividing each quadrant into 2 equal parts. So draw the radial lines by dividing each quadrant into 2 equal parts. Okay, and just draw it again. Okay, so this is the initial line. I'm dividing each quadrant into 2 equal parts here. This is also done. This is also done. This is also done. Divided each quadrant into 2 equal parts. Now, how to name it? Now, most of the students have a problem in naming this radial line also. So, easier way is first quadrant में कितना angle होता है? It's 90, right? Isn't it pi by 2 students? Angle क्या होता है पहला quadrant? एक quadrant का यहाँ पे? 5/2. Pi by 2. 90. If I divide it into 2 parts, pi by 2 को divide करो by 2. So क्या हो जाएगा? Pi by 4 आएगा कि नहीं? Okay. Yes. So this becomes pi by 4. This one is 2 pi by 4. This one. Now when I write 2 pi by 4, you know it is pi by 2. This one will become 3 pi by 4. This one will become 4 pi by 4, which is nothing but pi. This becomes 5 pi by 4. This is 6 pi by 4, which when simplified gives you 3 pi by 2 only. And this is 7 pi by 4. And finally, it is 8 pi by 4, which is nothing but 2 pi. So this is how we complete one entire rotation. Understood or not how to name the radial line?
Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. सपोज यहाँ पे हर क्वाड्रेंट को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे होते, तो हम हर एक रेडियल लाइन को क्या नाम देते? यू वुड हैव नाउ डिवाइडेड पाई बाय 2 बाय 3. So can you tell me what would be the name of every radial line in that case? Pi by 6. Yes or no? If suppose I would have divided into three parts, suppose मुझे each quadrant को तीन equal parts में divide करना पड़ता, तो हर radial line या फिर हर radial line quadrant को कितने angle में equal angle में divide करता? Pi by 6, that is 30 30 30 degrees में वो divide करता. So here we were supposed to divide into two equal parts, so pi by 2 divided by 2, that is how I got that. So you will be naming the radial line properly like this. Okay, so first part is done. Then you know you're having four equal loops, and first loop is to be drawn where? Where am I supposed to draw the first loop? Initial Initial line. line. Which is your initial line? Theta equal to 0. So when I say across, that means aisa, across. It has to lie above your initial line. ओके, सो इनिशियल लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो रेडियल लाइन है ना, दोज आर गोइंग टू बी द टेंजेंट्स, उसके बीच में होना चाहिए तुम्हारा लूप. समझ में आया? सो आई हैव ड्रॉन एंड कंप्लीटेड माय इनिशियल फर्स्ट लूप अक्रॉस द इनिशियल लाइन. नाउ दिस गेट्स ओवर in this sector. Immediately the next loop should start in the next sector, because it is already given here that you have to draw a loop in every consecutive sector. That is, when your n is even, not a single sector would be left vacant. That is what you have to see. Now it ends here. Immediately in the next sector, you have to start your next loop. Okay, this ends here and immediately start the next loop in the next sector. So now you can see, after drawing your rose curve, not a single sector is without your loop, and we have finally four equal loops. Understood or not, everyone? Yes or Yes, no? ma'am. Okay. And what you can do is, to make it more symmetric, you can first draw a circle. Okay. And say that that is a circle of radius 5. ठीक है. और उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारे लूप्स एकदम सिमेट्रिक दिखेंगे. सो यहाँ पे मैंने नहीं ड्रॉ किया, तो तुम देख सकते हो थोड़ा सा मोटा है थोड़ा. सो व्हाट, टू मेक इट मोर सिमेट्रिक एंड मोर स्मूथ rose curve, what you can do is first draw a circle of radius pi and then finish off your loop like this. Now, one mistake that normally I've seen in students when they make is, they make the rose curve like this. Aisa. No. Okay. Remember, it should not be pointed at this point. यहाँ पे point नहीं होना चाहिए. यहाँ पे क्या होना चाहिए? Blunt होना चाहिए. Why? Because actually जब तुम उसको tracing of polar curve से trace करने जाओगे ना, you are going to have a tangent here. इस पॉइंट पे ना टेंजेंट आता है. सो जब भी टेंजेंट आता है, इट इज गोइंग टू हैव अ स्मूथ कर्व लाइक दिस. Okay, you cannot make a shape like this. So never make a rose curve with pointed ends like this. Is this understood? This is one very common error we have seen in the paper, and marks भी इसके लिए कटते हैं. इससे क्या हो जाता है? You are showing that at this point your curve is not differentiable, which is wrong. Okay, you are having a tangent there, and that is why it is expected that you make a smooth curve that at these points. Understood or not, everyone? Yes. Yes, ma'am. Okay, chalo, we'll take one more rose curve. Quickly, we'll take. Now, I'm not going to write down the procedure. You will only tell me the procedure and we'll directly trace it. So, number 2, suppose I'm taking r is equal to a sine 3 theta. Okay, one cos we took, now we'll take sine. So, now tell me, what is the first step? Divide each quadrant into how many equal parts? N equal parts. What is n here? 3. Yes, so I'll be dividing each quadrant into three equal parts here. Okay, we need to divide each quadrant into three equal parts. So I'm going to divide it 1, 2, 3. हो गया? Three equal parts, same way here. 1, 2, 3. Then we have here 1, 2, 3. Then we have here 1 and 2, 3. So you can see I have divided each quadrant. I do not have a scale, so थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो गया है. You know how to divide each quadrant in. What nonsense. Oh.
I'll just draw it again. There is some problem with this pen tab. So we were having pi by 2, initial line theta equal to 0, pi, and we had 3 pi by 2. And I'm going to divide each quadrant into 3 equal parts like this because our n is 3. One, 2, 3. Then we have here 1, 2, 3. And then we have here 1, 2, 3. Okay. Now, how to name these radial lines? I told you how to name these radial lines. Students, tell me. How will you name the radial lines? You're dividing each quadrant, that is 90-degree, into how many equal parts? You're dividing each quadrant into how many equal parts? Tell me. You have divided each quadrant into how many equal parts, students? 3. 3. 3. Yes. So therefore, what am I going to get? Pi by 6. So tell me, this first radial line will be pi by 6. What is the second radial line going to be? 2 pi by 6. This is 2 pi by 6. What is this radial line? The third one going to be 3 pi by 6, which is nothing but what? What is 3 pi by 6? Nothing but pi by 2 only, na? Yes, ma'am. Yes. Pi by Yes. 2. Then next will be 4 pi by 6. Then comes 5 pi by 6. Then comes 6 pi by 6, which is pi. After 6 pi by 6 comes 7 pi by 6, 8 pi by 6. Then comes 9 pi by 6, which when simplified gives you what? 3 pi by 2 only. Okay. 10 pi by 6. 11 pi by 6, and finally we have 12 pi by 6. So this is how we name the radial lines. Remember, if you don't name it, I will be cutting marks because I said if it is for 3 marks, I want a perfect figure. So naming the radial lines and drawing the loops correctly with no pointed petals, remember you have to take care of this. Okay, if you want full 3 marks. Okay, so we have named the radial lines. Next comes, since it is sine, where is the first loop going to lie? Across which radial line? It is going to lie pi across by 2. pi pi by by 2. 2n, है ना? And Pi by 2n. अब यहाँ पे n क्या है? What is n? 3. 3. So can you tell me 3. where should I draw my first loop? My first loop should be across which line? If n is 3, so पहला loop कहाँ पे बनेगा? pi कौन by से 6. radial line? Yes, pi Pi by by 6. 6. Yes, yes. So our loop should be lying across pi by 6. So I have drawn the first loop across pi by 6. When I say across, that means that loop should be symmetric about, oh my God. Just a minute. Huh? Okay. So when I say the what to say, the loop is lying across pi by 6 line, means what are we saying is you have to draw a loop that is symmetric about pi by 6 line like this. So this is our first loop I have drawn. Okay, once I finish the loop, students, I need to draw the remaining loop. So when your n is even, what did I say? How many am I supposed to draw the next loop immediately in the next sector, or I need to leave 2 sectors vacant in between? Vacant. Yes, we need to leave 2 sectors vacant. So I have ended it here in this sector. Immediately, the next 2 sectors have to be left vacant. And then in this particular sector, I'm going to start my next loop. So you can see this is my loop going to be. The second petal is ready. Okay, now you can see this petal got ended here in this sector. That means immediately after that, 2 sectors is we need to leave vacant, and now it will be started in this particular sector,
and it ends here in this particular sector. Now, to check whether you are right or not, just see whether there are two sectors vacant between the first loop and the last loop. So, are we having two sectors vacant between first and the last loop? Yes. Yes. So, this is how we complete our rose curve. Clear or not? मैम Yeah, tell me. मैम वो थोड़ा सा रोज कर्व थोड़ा ऊपर ऊपर से बताओगे क्या? वो थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया था तो मिस हो गया थोड़ा. Huh. So, what I was explaining in the like initial stages, this was the procedure. If you remember this procedure, कोई भी rose curve दिया हो, you can easily trace. Now, first thing is R का power यहाँ पे 1 होना चाहिए, because I've seen many students इसका भी rose curve बनाते हैं, ये जो गलत है. ठीक है, ये क्या होता है, ये लेमनिस्केट. जैसे R का पावर 2 हो जाता है वो लेमनिस्केट होता है. R का पावर 1 हो तो rose curve है. So now once you identify that it is a rose curve, this is the step for tracing a rose curve. First one is divide each quadrant into n equal parts. जो भी तुम्हारा ये n होगा, you need to divide it into n equal parts. Second, जैसे ही डिवाइड कर दिया उसके बाद तुम्हें देखना है कितने पेटल्स से बनाना है, तुम्हें कितने लूप्स बनाना है. तो उसके लिए डिपेंड करता है whether your n is odd or n is even. If n is odd, then we are going to have exactly n equal petals. और अगर तुम्हारा n even है, so double the number of n, that is twice n equal petals तुम्हारे पास रहेगा. ठीक है. सो इस सेकेंड स्टेप में क्या पता चलता है, कितने तुम्हें लूप्स बनाने हैं. वो किस पे डिपेंड करता है, n वैल्यू पे. n ऑड है तो एग्जैक्टली n पेटल्स होंगे, n इवन है तो ट्वाइस n पेटल्स आ जाएंगे. जैसे ही पेटल्स मिल गए, कितने पेटल्स बनाना, अब देखना है स्टेप नंबर 3 में कि पहला लूप कहाँ पे प्लेस करना है, कहाँ पे ड्रॉ करना है. सो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे रोज कर्व में कॉस है कि तुम्हारे रोज कर्व में साइन है. अगर कॉस है, द फर्स्ट लूप इज गोइंग टू लाई अक्रॉस इनिशियल लाइन. इनिशियल लाइन मींस थीटा इक्वल टू 0 लाइन के अक्रॉस पहला लूप लाई करेगा. और अगर साइन है तुम्हारे रोज कर्व में, देन द फर्स्ट लूप इज गोइंग टू लाई अक्रॉस थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन, 2n लाइन. नाउ n में बस तुम्हें ये वैल्यू डालनी है, जो यहाँ पे n वैल्यू होगी उससे तुम्हें लाइन मिल जाएगी कि किस किस लाइन के अक्रॉस तुम्हें फर्स्ट लूप ड्रॉ करना है. ठीक है. सो पहले पता करेंगे स्टेप 1 में कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. सेकंड स्टेप से पता चलता है कितना लूप रहेगा तुम्हारे रोज कर्व में. और थर्ड स्टेप में हम ये देखते हैं कि तुम्हें पहला लूप कहाँ पे प्लेस करना है. ओके. नाउ स्टेप 4 में हम क्या देखते हैं, स्टेप 4 में देखना है कि बाकी के लूप कहाँ पे प्लेस करने हैं. सो वो कैसे हमें डिसाइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n. इफ n इज ऑड तो तुम्हें दो लूप के बीच में दो सेक्टर वेकेंट छोड़ना है. So you have to leave two sectors vacant between two consecutive loops if your n is odd. जैसे ही loop एक खत्म हुआ, next two sectors तुम्हें खाली छोड़ने और बाद में next loop start करना है. और अगर n even है तो जैसे ही एक loop में खत्म हुआ, immediately next sector में तुम्हें next loop start करना है. मतलब जब n even हो तो कोई भी sector vacant नहीं जाता, हर sector में कोई ना कोई loop रहता ही है. ठीक है. So draw loops in every consecutive sector. And finally मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर. सो रेडियस क्या होगा, क्योंकि कॉस और साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है तो ये जो ए होगा ना वही तुम्हारा रेडियस है. सो व्हाट यू कैन डू इज ए रेडियस, कोई भी आर्बिट्री रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दो और उसको ले लो उसका मैक्सिमम वैल्यू एंड देन उसके अंदर तुम्हें रोज कर्व बनाना. क्लियर है? यस मैम. और हाँ मैम एक थोड़ा हाँ. स्टेप 5 का दिखाओगे क्या एक बार, कि मतलब क्या कौन है सा? वो? क्या क्या? मतलब स्टेप 5 में प्रॉपर लिखना क्या है वो पूछ रहा था. नहीं नहीं, स्टेप 5 में सिर्फ अगर तुमने नहीं भी लिख दिया तो जाने दो. ठीक है, तुम अच्छा. स्टेप ओके. 5 ओमिट कर दो. स्टेप 5 ओके. क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर क्या होगा. तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है तुम्हारा यहाँ पे, हम्म. हाँ, ये जो वैल्यू तुम्हें दिखता है ना यहाँ पे, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना आर का. हाँ. तो ये क्या है यहाँ पे आर की वैल्यू, इसकी वैल्यू ए है. ठीक है. सो हम्म. ए मैंने ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, 5. सो तुम इतना ही बता रहे हो कि आर मैक्स ए, इसका मतलब तुम्हारा पूरा रोज कर्व विल लाई विद इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5. 5. अंडरस्टूड. ये ऐसा एक सर्कल तुमने रेडियस 5 का बना दिया तो इसके अंदर तुम्हारा लूप लाई करने वाला है. बस इतना बता रहे हैं हम लोग. अगर तुमने वो स्टेप नहीं भी लिखा तो चलेगा, स्टेप 4 तक लिखो, क्योंकि मैंने क्या कहा, रोज कर्व के प्रोसीजर के लिए मैं 2 मार्क दूंगी और 3 मार्क विल बी फॉर योर कर्व. Properly drawing the radial lines, naming it and drawing the entire loop. Clear or not? यस. No. Okay. Now is it clear everyone? यस. यस. ठीक ठीक है. ठीक. Okay.
Fine. So if you want, we can take एंड just हाँ बोलो. हेलो मैम, और इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे मतलब हम्म उसमें आपको मतलब हम लोगों को ए साइन नहीं तो कॉस, और फिर जो थीटा का जो भी वैल्यू रहेगा उतना ही दिया रहेगा। जैसे कि अपन लाइक हम्म अपना ये था कार्डियोइड था, तो उसमें कैसे लाइक ए वन प्लस कॉस थीटा और वैसे था ना। तो हम्म. अगर इसको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे ये आर इज ऐसे इक्वल फॉर्म टू। R इज इक्वल टू ए कॉस एन थीटा फॉर्म, या फिर R इक्वल टू ए साइन एन थीटा, ये है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन. ओके ठीक मैम। है. या ऐसे, और याद रखना कि R का पावर क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 है. ठीक है. तो ही यस। वो रोज कर्व है. ओके। क्योंकि हमारा लेमनिस्केट भी था ना, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हाँ। कॉस टू थीटा. ठीक है. तो ये एक क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ हुई थी लास्ट टाइम, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ. अगर ए कॉस्ट आर इक्वल टू ए कॉस टू थीटा दिया है, तो ये दिस इज रोल्स कर्व. ठीक है. यस। एंड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू दिया है, तो ये लेमनिस्केट है. ये तुम्हारा लेमनिस्केट हो जाता है. ठीक है. यस मैम। ओके फाइन. ठीक है. फाइन. सो एज आई सेड इनिशियली, मैंने क्या बोला, ये दिस कंप्लीट्स अ कर्व ट्रेसिंग. पोलर में, कार्टेशियन में पूरा करना है, लेकिन पोलर में याद रखना, आप लोग सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करोगे कार्डियोइड्स पे, लेमनिस्केट्स पे. दो तरह के लेमनिस्केट होते हैं, एक कॉस वाला और एक साइन वाला. जो हमने साइन वाला ट्रेस किया था, कॉस वाला यू कैन फाइंड इट इन नोट्स, मैं अपलोड करती हूँ. एंड फाइनली रोज कर्व. सो पोलर में मैंने ये 3 फैमिली लिए, आप लोगों को ये 3 फैमिली अच्छे से पढ़ना है. समझ में आया? यस मैम। ओके. ठीक है. चलो. यस Fine. So now we'll be moving on to multiple integrals. So वहां पे भी we'll be taking questions on these curves only. So that is why I want to practice this, because unit number 3 का base बनता है तुम्हारे curve trace. ऐसा curve दिया है जहाँ पे तुम्हें trace करना है. You should know how to trace and then get the limits of that particular curve. Okay, that particular region. So now we'll start with the next unit, which is multiple integrals. Multiple integrals. Okay, so now we are directly starting with topic number 1. Topic 1 हम ये लेंगे when limits not provided, मतलब region draw करके उसमें limits कैसे निकालने हैं, और फिर उसको लेकर हमें integrate कर कैसे करना है, we'll see. Okay, so integrals when limits not provided. So as I said, the curves will be only from Cartesian and polar में भी cardioids, lemniscates and rose curves only. Okay, उससे या फिर तुम्हारा जो normal curves है like parabola, straight lines, okay, circle, which you already know. Okay, we have done in primary classes. वैसे curves होंगे. You will not have any other curves other than that. So suppose I am taking one question, that is double integrate y dx dy over a region R, where R is bounded by y is equal to x squared, x plus y equal to 2, and x equal to 0 in the first quadrant. Okay, so you can see this is very simple. You know these curves already known to you. One is parabola. Okay, second one is a straight line, the third one is also a straight line. So we just need to draw these curves and then find out the limits, and then use that limits to integrate and get our answer. So we'll see what we are going to do. First of all, can you tell me what is y equal to x squared, students? What is y equal to x squared? What is y equal to x squared? क्या है y equal to x squared? It represents what? Parabola, na? Yes or Yes, no? ma'am. Okay, Yes, ma'am. parabola. Now, parabola is symmetric about which axis? Tell me. This is symmetric about which axis? Parabola मुझे symmetric about which axis बनाना है?
Y axis. y एक्सिस। क्यों? हमने ये कार्टेशियन कर्व ट्रेसिंग में पढ़ा था कि अगर x का पावर इवन हो तो द कर्व इज गोइंग टू बी ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट Y. y एक्सिस। ठीक है, ये गलती बहुत करते हैं स्टूडेंट्स, ऊपर बनाने की जगह पे साइड में, राइट साइड में बना देते। तो यू शुड नो दिस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर विल बी अ पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। why? बिकॉज पावर ऑफ x इज इवन एंड नॉट y। ठीक है, अगर x इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया होता देन यू वुड हैव मेड अ पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस लाइक दिस X हियर। axis. ठीक है, so I'll now draw y equal to x squared. So I need to draw the parabola symmetric about y axis like this with vertex at the origin. Okay. Then comes x plus y equal to 2. Now you can see students, ये याद रखना, जब भी x and y का power 1 हो, that means it is a linear equation and linear equation always represents a straight line. ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम में x प्लस वाई या ऐसा कोई लीनियर इक्वेशन दिया था तो बहुत सारे बच्चों ने उसका सर्कल बना दिया था। सर्कल के लिए यहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर होना जरूरी है। That is a standard equation for circle. But if it is x plus y equal to 2, that is just a straight line. And how to draw a straight line, I'll tell you. If it is a straight line, students, हमें सिर्फ 2 points चाहिए straight line बनाने के लिए। तो वो कैसे बनाएंगे? एक बार क्या करो ना, hide your x. x को hide कर दो और मुझे बताओ y की वैल्यू क्या आ रही है? 2. 2. So y axis पे मैं suppose this is 1 and this is 2. तो ये पॉइंट पे तुम्हारा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। Now hide y and tell me what is the value of x you are getting? 2. 2. 2. So you can see it is intersecting your x axis also too. So did I get the 2 points on which the line is intersecting? बस उसको दोनों को join कर दो। Did I get my line? Understood or not? Yes. Okay, Yes, ma'am. so that is how you have to draw a straight line. Remember, straight line draw करने के लिए we just require 2 points. How do you get those 2 points? Once hide your x and get the corresponding value of y, and once hide y and get the corresponding value of x, you will get the points, 2 points. वो दोनों से पास होता हुआ तुम्हारा बड़ा सा एक straight line बना दो। ठीक है, so I got my straight line x plus y equal to 2. This is x plus y equal to 2. Then what is x equal to 0 line? x equal to 0 कहाँ पे होता है? x equal to 0 कहाँ पे होता है बताओ? यहाँ पे ओरिजिन। यस, y एक्सिस पे। ये पूरा लाइन y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना? So your y Yes, axis ma'am. itself is what? X equal to 0. So now can you tell me what is the region that is being bounded by all these curves? Y equal to x squared, x plus y equal to 2 and x equal to 0. Can I say this is the region? Yes or no? Which is bounded by y equal to x squared, x plus y equal to 2 and x equal to 0। ये तीनों से अगर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे बोला होता y equal to x squared, x plus y equal to 2 और y equal to 0, y equal to 0 क्या होता? x एक्सिस। तो बता सकते हो क्या रीजन होता उस टाइम पे? कौन सा वाला रीजन होता अगर मैंने y equal to 0 मतलब x एक्सिस दे दिया होता? ये रीजन आता ना उस टाइम पे, समझ रहे हैं? y equal to x squared, x plus y equal to 2 and तुम्हारा x एक्सिस उस टाइम पे। Understood or not? Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ पे मैंने x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस बाउंड कर रहा है तुम्हारे रीजन को। सो y एक्सिस x प्लस y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू x स्क्वायर। सो दिस इज द रीजन दैट वी आर वेयर वी आर सपोज टू इंटीग्रेट दिस इंटीग्रल। आई होप फाइंडिंग द रीजन इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। Yes. Okay, next comes to find limits. Now once we have found the region, I need to integrate this integral को integrate करने के लिए we require limits. So we'll have to see how to get the limits. Now there are two possibilities. Either you can go with first respect to x and then respect to y, and the second option is first respect to y and then respect to x. Now suppose you decide to go first with respect to x, then with respect to y. So what you need to do in that case is make horizontal strip in the region.
Okay, horizontal strip बना लो and integrate. And suppose you want to first integrate with respect to y and then with respect to x, then you have to make a vertical strip in the region. ओके ये याद कर लो, यहाँ पे बहुत गड़बड़ करते हैं. हॉरिजॉन्टल मतलब लाइक दिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल मतलब लाइक दिस पैरेलल टू वाई एक्सिस. इज दिस क्लियर? सो नाउ टेल मी which order you want to go, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई ऑर्डर बोला नहीं है. वी आर फ्री टू यूज एनी ऑर्डर वी वांट. तो टेल मी which order do you want to go with here, students? Which order do you want to go with? Vertical. Vertical, yes. Here vertical would be a good option. Why? Because अगर तुम लोग horizontal से जाओगे, कितने regions आएंगे? देखो, when I'm making a horizontal strip like this, you can see it is starting from y-axis, going out of x plus y equal to 2. But is it so throughout the region? Throughout region वैसे ही हो रहा है. लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगी तो क्या होगा? अब मैंने एक horizontal strip बनाया तो क्या हुआ? It is starting from y-axis, but now it is going out of what? Parabola, na? Yes or no? So that Yes, means ma'am. in this case you will have two regions. So क्यों हमें अपना काम बढ़ाना है? So immediately when you see that if I'm making a horizontal strip, you can see left hand side boundary is throughout remaining same, but the right hand side boundary is changing twice. So therefore horizontal strip won't be a good option here. क्यों? क्योंकि जैसे ही दो बार बाउंड्री चेंज हो रही है राइट वाली, मतलब दो रीजन्स आ जाएंगे अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लिया. अंडरस्टूड दिस पॉइंट? Okay. Yes, ma'am. So therefore, which order will I prefer here? I'll prefer here vertical Vertical. strip. So क्योंकि मैंने अगर यहाँ पे vertical strip बनाया, you can see the upper boundary is throughout same and the lower boundary is throughout same. Because if I make a vertical strip यहाँ पे कहीं पे भी मैं बनाऊं, वो लाइन से शुरुआत हो रही है और बाहर जा रहा है. Sorry, parabola से start हो रही है and it is going out of x plus y. So you can see nowhere in the region the upper boundary is changing, nowhere in the region the lower boundary is changing. So therefore, which order will be a like a good choice here? Which order will be a good choice here? Vertical. Vertical strip. Okay, so now we go with vertical strip, and the moment you decide going with vertical strip, next step is write down the limits. ठीक है? So अब limits कैसे निकालते हैं? ये स्टार्टिंग पॉइंट पे तुम्हारी y की वैल्यू क्या है? क्योंकि जैसे वर्टिकल निकाल रहे हो तुम, वर्टिकल स्ट्रिप मतलब पहले तुम इंटीग्रेट करने वाले हो विथ रिस्पेक्ट टू y. सो सबसे पहले y की लिमिट. ठीक है? सो यू विल हैव टू फाइंड आउट what is the value of y at this starting point, because y के लिए हम हमेशा नीचे से ऊपर जाते हैं. रिमेंबर, कभी भी ऊपर से नीचे मत आना, नीचे से ऊपर, छोटे से बड़ा जाते हैं. सो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट what is the value of y at this starting point, एंड यहां से तुम्हारा स्ट्रिप बाहर जा रहा है रीजन के. So this will be your upper limit. This is your lower limit, and the other point is your upper limit. So now tell me, what is the value of y at the starting point? Can anyone tell me what is the value of y at this point? ये कौन सा कर्व है? कर्व से निकालना है तुम्हें. ये कौन सा कर्व है? पैराबोला वाला कर्व? Yes or no? What is the equation of Yes. parabola? Tell me. What is the equation of parabola here? Y Y equal to equal to x square. So X can square. I say the limit of y will be x squared, y equal to x squared. Don't go for finding a point, because when you find a point, you make it specific to a particular point. No, we have to cover all these points. So therefore, वो कैसे मिलेगा? जब मैं value of y ढूंढूं from the curve. So ये कौन सा curve था? Y equal to x squared. So throughout from this portion to this portion, what is the value of y going to be? X squared only on the curve. 2. Now from where it is going out? It is going out of this line. So help me to find out what is the value of y on this line. Can anyone tell me? What is the value of y on that line? Y is equal to? क्या होगा उस लाइन पे तुम्हारी y की वैल्यू? इक्वेशन से ही निकालो. ये तुम्हारा इक्वेशन है. देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी? 2 माइनस x. है कि नहीं? है ना? बिकॉज इट इज x प्लस वाई इक्वल टू 2. सो इस लाइन पे y की वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल टू 2 माइनस x. क्योंकि 2 सिर्फ इस पॉइंट पे होगा. क्या हम सिर्फ यही पॉइंट ले रहे? हमें ये सारा पॉइंट लेना है ना, ये पूरा लाइन लेना है यहां से यहां तक.
सो वो सारे पॉइंट्स कब कवर होगा? जब तुम y की वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन निकालो. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ y ऑन द लाइन स्टूडेंट्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y ऑन द लाइन? 2 minus 2 x. minus x. So therefore this becomes the limits of y. Is the limit of y clear everyone? Yes, ma'am. ओके तो पहला लिमिट Yes. होना चाहिए वेरिएबल. वेरिएबल लिमिट कैसे निकालते हैं? फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एट द स्टार्टिंग पॉइंट. वो कैसे निकलेगा? फ्रॉम द कर्व जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, उस कर्व पे तुम्हारी y की वैल्यू क्या है वो एज इट इज लिख दो. और दूसरा, जैसे एंड पॉइंट पे आओगे उस लाइन पे या उस कर्व पे तुम्हारे y की वैल्यू क्या हो वो तुम्हें लिखना है. तो ठीक है, पॉइंट नहीं निकालना है. कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट करोगे तो तुम वो पूरा रीजन कवर नहीं करोगे. जैसे y इक्वल टू 2 बोलोगे तो सिर्फ तुम ये पॉइंट ले रहे हो, बट व्हाट अबाउट दिस एंटायर रीजन फ्रॉम हियर टिल हियर, पूरा कवर करना है. सो देयरफॉर हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन. सो दिस बिकम्स द लिमिट ऑफ y. Now I want the limit of x. So जैसे ही तुमने y की लिमिट ले लिया फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, हम सिर्फ इस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं. बट व्हाट अबाउट दिस एंटायर रीजन? मुझे यहां से लेकर इस वैल्यू तक करना है. तो यहाँ पे मुझे x का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा. सो हाउ विल आई गेट द इंटरसेक्शन? विल सी दिस पॉइंट. कैन एनीवन टेल मी दिस पॉइंट इज लाइंग एट द इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट? We can see it is lying at the intersection of y equal to x squared and x plus y equal to 2. Yes or no? 2. Yes. तो हम अब Yes. इसमें इसको ही सॉल्व करने वाले हैं. तो मैं क्या करूंगी? Substitute one in the other. So if I substitute y equal to x squared in this equation, I'll get x squared plus x minus 2 equal to 0, which is a quadratic equation. अब हम quadratic equation कैसे solve करते हैं? Minus b. This is your b. This is your a. This is your B, this is your C. ठीक है? I hope you know how to find A, B, C. ठीक है? So, just a minute. हाँ. So, minus B plus or minus under root of B squared, that is 1 minus 4AC. So, when I write 4AC, it's going to be plus 8 upon 2A, that is 2. So I am getting this as minus 1 plus or minus 3 upon 2. So when I solve it, what I'm going to get? Tell me what are the values you are getting? एक बार होगा minus 1 plus 3 upon 2 और दूसरी बार होगा minus 1 minus 3 upon 2. सॉल्व करने पे क्या आ रहा है बताओ? इधर क्या आ जाएगा? 1 और यहाँ पे -2. ये बताओ कौन सा वैल्यू लेंगे हम? 1 के -2 लेंगे? 1. 1 क्योंकि ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू टेक -2. कहाँ पे होगा? ये वाला. बट हमने पूरा रीजन लिया ही नहीं है ना, हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन है. सो देयरफॉर माय लिमिट्स फॉर x विल बी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x इन दिस रीजन? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x इन दिस रीजन? 1. नो, दिस यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? y एक्सिस पे -2. y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या है? y एक्सिस पे x की वैल्यू इधर 0 है ना. यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 से बाउंड हुआ है हमारा रीजन. मतलब ये कौन सा लाइन था? ये हमारा x इक्वल टू 0 वाला लाइन है. सो हमारा रीजन स्टार्ट हो रहा है x इक्वल टू 0 से और कहां तक जा रहा है? x इक्वल टू 1 तक. ठीक है, ये x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट होगा और ये x इक्वल टू -2 वाला पॉइंट है, सेकंड वाला. बट हमारा रीजन है ही नहीं यहाँ पे. यस और नो? सो यहाँ पे मैंने स्क्वायर है, मतलब x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू भी 1. तो ये पॉइंट कैसे हो गया? 1, 1. सो आफ्टर फाइंडिंग द लिमिट्स ऑफ y, मुझे ये स्ट्रिप इस पॉइंट से, मतलब ये y एक्सिस से मैक्सिमम कहां तक ले जाना है? इस पॉइंट तक. फ्रॉम हियर टू हियर. सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x इन दिस रीजन? यू सी व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x? यू सी हियर 0 है ना. 0. This is x equal to 0 and it will go up till which point? मतलब मैं अगर स्ट्रिप बनाना शुरू करूँ यहाँ से स्टार्ट करते हुए ज्यादा से ज्यादा कहां तक मैं जा सकती हूँ? x इक्वल टू 1 पे खत्म करना होगा ना हमें. यस और नो? Yes, ma'am.
Is the limit understood or not? Please tell me first of all. ये लिमिट समझ में आया? Y की लिमिट कैसे हमने स्ट्रिप में से निकाली? What is the value of Y at the starting curve and what is the value of Y at the ending curve? And then you have to see in your given region what is the minimum value of the next variable. So the next variable here is X. X का minimum value तुम देख सकते हो, region ही start हो रहा है Y axis पे. Y axis पे X की value 0 होती है और वो कहाँ पे जाकर end हो रहा है? हमारा region end हो रहा है यहाँ पे 1,1 पे. तो maximum value of X क्या होगी? 1. ठीक है? So that is how we got the limits of Y and X. And now I'm going to start with my integration. I am asked to integrate Y and I have selected which order? I have selected dy dx order. What is the limit I have found for dy dx order? X square to 2 minus x and 0 to 1. Okay. Now once you put this, now you know how to integrate this. Come on. First we have to integrate with respect to y. Is there any term of y we are having? Is there any term of y we are having here? Yes. Y hai na? What is the integration of Yes. y? Tell me. What is integration of y? What is the integration of y with respect to y? Y squared upon Two. y squared upon 2. हो गया integration of y with respect to y. And now we put the limits for y. What were the limits of y we had found? X squared and 2 minus x. So you can see we have completed the integration with respect to the first variable y. अब क्या बचा है? सिर्फ limits डाल दो. ठीक है? So if I put the limits now here 0 to 1, you can take this 1 by 2 out because it is a constant. Okay? So 1 by 2 out निकाल दिया. अब y की जगह पे ये limits डाल देंगे. So I am going to have 2 minus x squared minus जब मैं y की जगह पे x squared डालूंगी, what is x squared का square going to be? X to the power 4. Yes, x to the power 4. Now this one's asked, सबने x squared लिख दिया था और x squared cancel कर दिया, इस वजह से wrong हो गया. Please be very careful when you're putting the limits. It is 2 minus x whole squared minus x squared का squared which is x raised to 4. अब बचा है single integration. Single integration के लिए पहले हम क्या कर देंगे? We'll just expand this. So a minus b whole squared का formula use करेंगे. 4 minus 4x plus x squared माइनस एक्स रेज टू 4 dx. अब ये हो गया एक सिंपल सिंगल इंटीग्रेशन. चलो बताओ मुझे इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? 4 का इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू एक्स. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 4? हाँ बोलो. 4x आएगा ना? इंटीग्रेशन ऑफ 4 रिस्पेक्ट टू x 4x. Yes. माइनस 4 as it is integration of x with respect to x क्या होगा? x का इंटीग्रेशन x squared by 2. What is integration of x squared you are going to have? X cube by 2. X cube by 3, sorry. 3. 3. Yes. And 3. finally, what will be integration of x raised to 4? X to the power 5. Yes, 5. 5 to 5. Okay, 0 to 1. And now we'll put the limits quickly. So 1 by 2. यहाँ पे आएगा 4 minus ये 2 and 2 cancel. So 2 into 1. X के जगह पे 1 डालेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा. Plus 1 by 3 minus 1 by 5. ये डाल दिया हमने अपर लिमिट. और जब हम लोअर लिमिट डालेंगे 0, 4 into 0, 0, ये भी 0, 0, 0. So this is what we are going to have. Now we just have to simplify this. You can use a calculator and get me the answer. Anyone? 2 plus 1 by 3 minus 1 by 5. I am doing it using LCM. You can directly use your calculators and get the answer. So LCM is what? 15. We have 30 plus 5 minus 3 upon 15. So क्या आएगा आंसर बताओ मुझे? 35 minus 3, 32. So 32 by 15 and solving this, we are going to have 16 by 15. This is the answer.
Is this clear, everyone? So what was important here is, first of all, from the equation, drawing the region and identifying the region, drawing the curve and identifying the correct region. Unnecessary कुछ लोग क्या करते हैं, ये पूरा region ले लेते हैं, not required. अगर मैंने यहाँ से x इक्वल टू 0 निकाल दिया ना, सिर्फ बोला होता y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x प्लस वाई इक्वल टू 2 के बीच का रीजन, तो पूरा आ जाता ये दोनों के बीच का रीजन. बट यहाँ पे मैंने वो नहीं रखा था. क्वेश्चन मैंने क्या बताया, I have asked you to find a region that is bounded by these three curves that I've given here. Okay, these three curves. So you have to find the region bounded by those three curves only. You have to see the optimum region that is bounded by all the three. So this was the possible region. Once we get the region, you have to look at the function and decide which order will be easier for you, going with a horizontal strip or a vertical strip. Once you identify the strip that is going to make your work easier, draw the strip and write down the limits. Okay, now ये याद रखना, अगर horizontal strip है, you are first going to write down the limits for x and then with respect to y. And if you're going to draw a vertical strip, you're going to first integrate respect to y and then respect to x. और फिर limits लिखने के बाद put the limits in the integral and then solve it. Let me know if there is any query in this question. Have you all understood? Is the question understood? Yes, ma'am. Ma'am, yes, Hmm. ma'am, this understood. Okay. Ma'am, Fine. So, how is the mark distribution in this question? this question. So if we'll ask any region that is where limits are not provided, we'll give it 5 to 6 credits. So what we'll do is 1 mark for the region, 1 mark for limits, 1 mark integration with respect to first variable, 1 mark integration with respect to second variable, and 1 mark for the final answer. Okay. And if it is a Okay. 6 mark question, I'll give you 2 marks for the figure. If it is, if I give you for 6 marks, 2 marks for the figure, 1 mark for limits, so 3 ho gaye, and then integrating respect to 1 variable, 1 mark, and final answer 1. So that is how it will go. Okay. Yes, ma'am. Take. So now let's take one more question, like wherein limits not provided and you have to take. So you will help me out drawing the region and getting me the limits. Okay. So let's take, most of the questions are having all this only. Okay, let me take a question, this straight lines only. Question number 2. Double integrate x squared y dx dy over region R, where R is bounded by x-axis y equal to x and y equal to 2 minus x. Okay, so this is the question. Come on. First of all, we'll draw the region. So draw the curves that are given to you. This is y-axis, this is x-axis. Okay. First is x-axis. Matlab your region is going to have x-axis as one of its boundary. Okay. I've drawn the x-axis. Then y equal to x. Can you tell me y equal to x line कैसे बनती है? Y equal to x line कैसे बनती है, students? Y equal to x line is a line passing through the origin and dividing your first and third quadrant into equal half like this. ये वाला. This is your y equal to x line. Okay. Remember this because most of the question has this y equal to x line. So y equal to x line is, you just have to draw a line passing through the origin, dividing your first and third quadrant into equal halves like this. So this is your y equal to x line. This is your x-axis. Now the third line, this is also a line. Why? Because both the variable x and y is having linear power. Yaad rakhna. So I told you a linear equation is a straight line. I should not get circles here. Okay, or parabola here. So this is y equal to 2 minus x, which is nothing but, if I write it on one side, will I get this line? जो अभी हमने previous वाले question में draw किया था. Yes, ma'am.
So it will be a straight line with x and y intercepts as 0, 2 and 2, 0. That is, your y 0. intercept will be 0, 2 and your x intercept will be 2, 0. So now tell me, which is a region that is bounded by all these three lines? Which is the region that is bounded by all these three lines? The region that is left side to x plus y is equal to 2 line. Okay, I'll just number it. Why I'm Yeah. saying this, because we always have similar regions. पहले question में भी similar आ रहा था. So these are the two regions I'm getting. Can you tell me one or two? Which one? Ma'am, the second region. Yes, the second region. Because first region में we have y equal to x, y equal to 2 minus x, but the third boundary is what? Y axis, जो मैंने नहीं दिया. अगर मैंने क्वेश्चन में y axis दिया होता तो फर्स्ट वाला रीजन हमारा रीजन होता, बट यहाँ पे मैंने दिया है find a region that is bounded by x axis, y equal to x and y equal to 2 minus x. So will this be our required region R? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. Yes. So we got the region. After drawing the curve, we need to find out which is our correct region. ऐसा region which is lying at the intersection and it is bounded by all the curves that is given to you. Now I'm going to write down the curves, and this is y equal to x. This is our y equal to 2 minus x. And this is our x-axis, which is nothing but y equal to 0. Now look at the region correctly and tell me which order will you prefer here. Are you going to go with vertical strip or you're going to go with horizontal strip? Ma'am, first order. नहीं, Horizontal. हॉरिजॉन्टल. वेरी गुड. क्योंकि वर्टिकल में क्या प्रॉब्लम है बताओ? वर्टिकल में क्यों नहीं मैम, जाएंगे? अपने को एक्स एक्सिस पूछा हुआ है एंड हाँ. हम लोग वाई एक्सिस पे करेंगे तो बेसिकली हम एक रीजन छोड़ देंगे. वी आर वर्किंग अक्रॉस द रीजन. ओके हम लोग ओके गुड. रीजन को नहीं ले रहे. Yes, that is also one good reason. और second way is, अगर मैंने यहाँ पे vertical strip बनाया है students, तो क्या दिख रहा है? Upper boundary change हो रहा है. Isn't the first upper boundary changing twice? यहाँ से यहाँ तक ये है boundary और यहाँ से तुम्हारा upper boundary change हो रहा है. Lower boundary throughout same है. लोअर बाउंड्री तुम्हारे रीजन में थ्रू आउट सेम है एंड दैट इज एक्स एक्सिस, बट अपर बाउंड्री तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा लाइन. सो देयरफॉर taking dy dx, that is taking vertical strip, won't be a good choice here because it is going to increase your work and we will be having two regions in that case. So therefore now what is the correct choice here students? क्या लेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑर्डर. Yes, dx dy. Just see, अगर मैंने horizontal strip बनाया तो throughout तुम्हारा left boundary भी same रह रहा है, कभी भी change नहीं हो रहा है, और region में throughout तुम्हारा right boundary भी same रह रहा है. कहीं पे भी मैं horizontal strip बनाऊं, it is starting from the same line and it is ending the same line. So therefore, going with horizontal strip is going to be a good choice here. Understood this or not? Yes, ma'am. Okay, so now you decided, you drew the region, you found the correct region of integration, and you have decided the order also. That is, you are going to first integrate respect to x and then respect to y. So therefore, now we'll write down the limits. Okay, so first respect to x मतलब x की limit चाहिए. What will you do? Now x के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? हम left to right जाते हैं. So who will tell me what is the value of x on this curve? What is the value of x on this curve? What 2 is the minus value? y. नहीं, ये वाला लाइन, ये कौन सा लाइन है? देखो ध्यान से, मैंने लिखा भी है वहां पे. ये कौन सा लाइन है? ये वाला. ये नहीं, ये मैंने पहले लिखा था. ये, हाँ, कौन सा लाइन है वो? ये x is equal to y is equal to x. हाँ, यस, ठीक है. सो यहाँ इस लाइन पे तुम्हारी x की वैल्यू क्या होने वाली है स्टूडेंट्स? थ्रू आउट फ्रॉम this point to this point, you can see anywhere in this line, the value of x is going to be what? Y. Is this understood or not? Is this understood or not? Yes. Yes, ma'am. Okay. Now you have to tell me, this is the end point of your strip. What is the value of x on this line? Tell me. What is the value of x on this line? ये equation से निकालो. चलो, ये equation से निकालो. What will be the value of x on this line? x ले लो left hand side 2 में. minus Yes, 2 x is minus y. equal to 2 minus y. Understood? So we got the limits of x
From where? From what is the value of x at the starting point of the strip and what is the value of x at the end point of the strip. That is from the curve itself निकाला. ठीक है. अब हमें चाहिए what will be ये strip हम कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं. मतलब मैक्सिमम हम लोग स्ट्रिप यहाँ से शुरुआत करेंगे यहाँ से और कहाँ तक जा सकते हैं. ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहाँ तक इस पॉइंट तक जाएंगे. So we'll have to find the intersection point of these two lines. Which two lines? Y equal to x और y is equal to 2 minus x का intersection चाहिए. तो वो कैसे मिलेगा? Substitute one in the other. So I'll get x is equal to 2 minus x. Taking x this side, I'll have 2x is equal to 2. So x equal to क्या हो गया students? 1. 1. तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 और y की वैल्यू इनमें से किसी एक में डाल दो x की वैल्यू. तो y की भी वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 1. So that is how I got 1, 1 as the point of intersection. To tell me what is the minimum value of y you see in this region? Minimum value हमारा 0. yes है ना. हमारा रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम हमारा स्ट्रिप कहाँ तक जा सकता है? अप टू दिस पॉइंट. और यहाँ हाँ वहां पे y की वैल्यू क्या है? 1. So understood how to take the limits? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, okay. Anyone having a query in limits, just let me know. Okay, so now once we got the limits, we'll rewrite our integral with the limits that we have found. So x squared y, I have decided to go with dx dy order. And then I'm going to write down the limits now. What is the limit here? I'm going to take here x is equal to y to x equal to 2 minus y. And then you take y equal to 0 to y equal to 1. Okay, so therefore, now we'll start integrating it 0 to 1 as it is. First, I'm going to integrate with respect to x. So what will be kept as constant here? When I'm integrating with Y. respect to y. So y will remain as it is. What is integration of x squared, students? Tell me. X cube by 3. Yes, x cube by 3 with the limits y to 2 minus y and we write down dy. Okay. Now we'll put the limits and see what we are getting. So 1 by 3 I am taking common out because it is a constant. 0 to 1 y as it is. And what do I have in the bracket is 2 minus y whole cube, that is upper limit, minus lower limit, that is y cube dy. Okay, now we need to solve this. So how are we going to solve this? Is here we'll be using the formula a minus b whole cube. So what is a minus b whole cube? A cube minus b cube plus 3ab squared minus 3a squared b. Okay, this is how we find the cube of difference of two real numbers. So if it is a minus b whole cube, then this is how we find the value. So now you can just put it here, expand it. Help me to expand this. So can you tell me क्या आएगा? A cube, a here is 2, b here is y. Just replace it and tell me what will I get? Expansion क्या होगा इसका? Ma'am, 8 minus y cube plus 6y square minus 12y. 6y squared minus 12y minus y cube. Y cube. dy. Yes, very good. And now what is remaining is you'll have to just multiply it with, okay, sorry, minus y cube अंदर है bracket के अंदर, and that is entirely multiplied with y. Yes, okay. So we got this 2 minus y cube and then you can see minus y cube was inside the bracket and all this is multiplied with y. So we'll quickly multiply it with y and then finish off the integration respect to the second variable. So I'll get 8y. Then this minus y cube minus 2y cube multiply with y, I'll get minus 2y raised to 4. And then we'll have plus 6y cube minus 12y squared dy. Now just this is a simple single integration. We'll finish it off. So y ka integration we know it is 8y squared by 2 minus 2y raised to 5 by 5 plus 6y raised to 4 by 4 minus 12y cube by 3
and then we put the limit 0 to 1. Simplifying this, you can see here, this is going to get cancelled. Here, this is 2 3s are, 2 2s are, and this 3 and 4. So now when I put the limits 1 by 3, when I put 1, I'm going to get 4 minus 2 by 5 plus 3 by 2 and minus 4. And when I put 0, it is all 0. This and this get cancelled. And finally, solving this, you can see the LCM is going to be 10. So therefore, it is minus 4. Yes, can you give me the answer here? Yes, students, what is the answer you're going to get? Can anyone tell me? नाइनटीन बाई 30। 19 है ना, यहाँ पे LCM 10 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? -4 प्लस 15 ना, आपने शायद दोनों माइनस माइनस ले लिया, या 11 by 30. yes, 11 by 30 is the answer. Yes. Okay. 11 by 30 is the answer. So I hope you understood how to take the limits and integrate it. Yes or no, students? यस मैम। Okay, fine. मैम Now, एक चीज पूछना हाँ, था। बोलो। मैम जो हम लोगों ने लाइक पिछले क्वेश्चन में हम्म, जो हम लोग ये किए थे, लाइक वो फॉर्मूला डाला था -a हम्म, प्लस माइनस रूट ऑफ b प्लस ac अपॉन 2। उसका रीजन क्या था मैम? उसका और रीजन लाइक हमने इधर नहीं किया वो, मतलब उस फॉर्मूला में नहीं डाला, बट वाई? किधर? इधर ये वाले में? हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे तो लीनियर इक्वेशन आया, x ओके हाँ। पावर 1 है, यहाँ पे x पावर 1 है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी। बट वहां पे क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। तो ये फॉर्मूला ओके हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास इक्वेशन ऐसा हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म। तो इसका सॉल्यूशन हमेशा b इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करते हैं, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। बट ये सेकेंड वाले में हमारा क्वाड्रेटिक नहीं था, हमारा लीनियर एक्सप्रेशन था, दोनों में 1 था पावर, इसलिए वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। ठीक है, यस मैम। ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज we'll solve it converting it to polar. Okay, change of order is there. Change of order. So if you have a question on changing the order, so अगर ये वाला पार्ट तुम्हें समझ में आ गया तो change of order बहुत ही easy हो जाता है. Okay, how do we do that is, suppose I give you a simple question like change the order of this integral. Okay, change the order, that is evaluate by changing the order. Number 1 is you have double integral of x into under root of a squared minus y squared, x squared minus y squared, dy dx, 0 to x, 0 to a. Okay, and my question is change the order and evaluate. That means if the question is change the order, students, you will have to change the order only, otherwise we will be losing marks. Remember, question से आंसर करना सीखो, अगर क्वेश्चन में चेंज द ऑर्डर बोला है तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा. सो हियर माय क्वेश्चन इज चेंज द ऑर्डर एंड इवैल्यूएट. सो व्हाट यू हैव टू डू इन सच केसेस, आई विल टेल यू. ओके, हाउ टू स्टार्ट इज, पहले तो हमें चेंज दी ऑर्डर करने के लिए चेंज लिमिट्स करने पड़ेंगे. लिमिट्स चेंज करने के लिए रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा, और रीजन ड्रॉ करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि आवर रीजन इज बाउंडेड बाय व्हाट कर्व्स. सो हाउ डू वी गेट दैट? We get that from the existing limit. So we'll write down region R is bounded by what all is given to you. You can see यहाँ पे, can you tell me पहला जो limit है will be for which variable? पहला limit will be for which variable?
Yes, students, पहला limit will be for which variable? y. Yes, y. Always remember, पहले limit में x है, मतलब it is going to be for y. So I'll write down region is bounded by y equal to 0, y equal to x equal to 0 and x equal to a. So अगर पहला limit y के लिए है, तो second वाला limit definitely x के लिए होगा. So I got that my region is bounded by all straight lines, these four straight lines. So to get the region, we'll have to quickly draw these regions. This is the x-axis, this is the y-axis. y equal to 0 मतलब कौन सा एक्सिस होता है, कौन सा लाइन होता है? x एक्सिस ना? x एक्सिस पे. यस. y equal to x मैंने अभी बताया था. व्हाट इज y equal to x लाइन, कैसे ड्रॉ होता है? That divide first and third Yes. quadrant. Yes. Third Straight quadrant. line passing through the origin and dividing your first and third quadrant like this. Yes, very good. Then x equal to 0 क्या होगा? y मतलब y axis ये y है ना? एक्सिस. हाँ. Yes, y axis. और x equal to a लाइन कहाँ पे आएगा? x equal to a लाइन x एक्सिस पे. x एक्सिस पे. सपोज यहाँ पे x इक्वल टू a वैल्यू है, तो मुझे सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ऐसे x इक्वल टू a बना देना है. ठीक है? दिस इज योर x इक्वल टू a. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज योर रीजन, बाउंडेड रीजन यू गॉट हियर? कौन सा रीजन होगा ये ट्रायंगुलर रीजन Yes. है ना? यू कैन सी y इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू x लाइन एंड x इक्वल टू 0, मतलब दैट इज द बाउंड हियर. ठीक है? So therefore this is a region that is being bounded by all your four lines. 1 2 3 4. ये 4 लाइन से bounded region हमें मिल गया. Now you want to change the order. So what is the given order? Your given order is dy dx and I want to change it to dx dy. अब मुझे बताओ, अगर हमें पहले with respect to x करना है और फिर respect to y, तो कौन सा strip बनाते हैं हम? पहले respect to x करना है and then respect to y, तो क्या करूं मैं यहाँ पे अभी? मैम विद रिस्पेक्ट टू Vertical x वाला straight. फर्स्ट और हाँ, सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है और बाद में चेंज दी ऑर्डर करना है. यहाँ पे दिया हुआ ऑर्डर है dy dx. आई वांट टू चेंज इट टू dx dy. सो कौन सा स्ट्रिप बनाऊं मैं? हॉरिजॉन्टल. यस, हॉरिजॉन्टल. सी, वर्टिकल मैंने पहले ही बताया था कि जब वर्टिकल बनाते हैं तो पहले हम y देन x, और जब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाते हैं इसका मतलब पहले हम x से करने वाले हैं एंड देन रिस्पेक्ट टू y. सो अब Then क्योंकि y. हाँ, सो अभी मैंने चेंज दी ऑर्डर बोला है, दिया ऑर्डर dy dx है और मैंने चेंज दी ऑर्डर बोला, तो तुम किस में कन्वर्ट करोगे इसे? dx dy में करोगे. ठीक है? सो dx dy करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? we'll have to make a horizontal strip in the region. So this is how I made the horizontal strip, and now I'll have to get the new limits with respect to this new strip. So tell me, what is the value of x? See, first I want to integrate respect to x. So पहले x की limit चाहिए. Can you tell me what is the value of x on this entire line? What is the value of x on this line? y. Y. Very good. 2. What is the value of x on this line जहाँ पे वो end हो रहा है? A. So, आगे limit of x. Now जो second limit होता है, मैंने क्या कहा? It is always constant. So you just have to find out what is the minimum value of y in this region and maximum value of y कहाँ पे आएगा. So can you tell me what is the minimum value of y in this region? 0. 0. 0. And what is this point going to be? Can anyone tell me x equal to a और y equal to x का intersection क्या point देगा हमें? सॉरी मैम कौन सा? ये x equal to a और y equal to x लाइन का इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? x तो क्या है वहां पे? a होगा. x तो हाँ. a ही है ना? A. ओके. हाँ और y is अगर equal. मुझे y चाहिए तो y क्या होगा? y equal to x है, हाँ तो हाँ. y की वैल्यू भी a. So will it be A a comma a हाँ. point, है ना? So y Yes. equal to a. You can see the minimum value of y in this region is 0 and maximum value of y in this region is a. Understood or not? Limits clear है? Yes. New limits with respect to dx dy कैसे ढूंढा हमने? And now we'll have to integrate with respect to this new limit. So ये questions हम 6 से 7 मार्क के लिए पूछेंगे. क्यों? क्योंकि पहले तुम्हें from the limits draw करना है region, तुम्हें reverse करने हैं limits, and then using the new limits you have to integrate and get the answer. Okay, so now I am rewriting my function.
that is no change in the function, x into under root of a squared minus y squared, x squared minus y squared, and we are changing the order to dx dy, and the new limits for dx dy is y to a and 0 to a. Is everything clear up till this step? Yes or no, students? Yes. Okay, okay, fine. So now we have to integrate it. So पहले हमें with respect to x करना है. Can you tell me पहले integration के लिए क्या constant रहेगा इसमें से? क्या constant रहेगा? कौन सा वाला term constant रहेगा? मैम वो रूट वाला. तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेर्ड माइनस वाई स्क्वेर्ड, क्योंकि वो ही एक टर्म है जिसमें कोई एक्स नहीं है ना. वी आर इंटीग्रेटिंग फर्स्ट रिस्पेक्ट टू एक्स. सो ये एक टर्म एक्स का है और ये एक टर्म एक्स का है. सो ये ही एक टर्म है जिसमें कोई एक्स नहीं है. तो हम क्या करेंगे, उसको बाहर ले लेंगे आउट ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रल, एंड आई एम गोइंग टू ओनली इंटीग्रेट एक्स into x squared minus y squared raised to half with respect to x. Is this clear or not? Yes or no? सिर्फ Yes. x वाले term को Yes. integrate Yes, करें. ma'am. Yes. Now, how are we going to integrate this? How are we going to integrate this? We'll see. Now, मैम बोलो. मैम अब हम लोग लाइक जब वो कांस्टेंट ले रहे थे, बट कांस्टेंट भी तो रूट में था ना उस टाइम पे. तो मतलब बेसिकली वो रूट हमें सॉल्व नहीं करना है क्या फिर? नहीं, देखो, जब रूट 2 इंटू 3 है, हम उसको इजिली रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं. हाँ. ओके, सो वही मैंने किया. अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेर्ड माइनस वाई स्क्वेर्ड इनटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेर्ड माइनस वाई स्क्वेर्ड है. तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको सिर्फ स्प्लिट कर दिया दोनों को. दिस इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेर्ड माइनस वाई स्क्वेर्ड इनटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेर्ड माइनस वाई स्क्वेर्ड. तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेर्ड माइनस वाई स्क्वेर्ड बाहर ले लिया और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेर्ड माइनस वाई स्क्वेर्ड अंदर रखा. क्लियर? यस मैम. ठीक है. ओके, सो हमने सॉल्व किया नहीं है, बस हमने उसको स्प्लिट कर दिया, क्योंकि दोनों को था पावर हाफ. तो मैंने एक जो पावर हाफ था उसको बाहर ले लिया और दूसरे वाले टर्म को एज इट इज अंदर. दोनों को देखो मैंने पावर हाफ रहने दिया है. अंडर रूट तो अभी भी दोनों टर्म को है कि नहीं? यस मैम. यस. ओके, समझिए. ना हाँ, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? हाउ डू वी ना ये टाइप के क्वेश्चंस है ना, ऑलमोस्ट हर तुम्हारे क्वेश्चन में रहता ही है और ये सॉल्व नहीं कर पाते. तो यहाँ पे याद रखना, कभी भी फंक्शन रेस टू, तुम्हारा कोई फंक्शन है और उसको कोई फ्रैक्शनल पावर है या हायर पावर है, 3 3 4 5 लाइक दिस. सो रिमेंबर, टू इंटीग्रेट एनी फंक्शन पावर n, you have to set its derivative along with it, and if you set its derivative along with it, no need of any substitution. The direct answer is f of x power n plus 1 upon n plus 1. So now look here carefully and tell me, this is power half. Now definitely we cannot expand this. Previous question में तो power 3 था, तो हमने चलो a minus b whole cube वाला फॉर्मूला लगा दिया, बट यहाँ पे तो power half है, तो इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? फंक्शन पावर n वाला फॉर्मूला. तो फंक्शन पावर n अगर अप्लाई करना है तो इसके साथ उसका डेरिवेटिव. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन जो ब्रैकेट के अंदर है विथ रिस्पेक्ट टू x? क्या होगा उसका डेरिवेटिव? क्या होगा इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x? बताओ, क्योंकि हम इंटीग्रेट रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं. मैम 2x minus 2x, 2x, only 2x. 2x. We are integrate Okay, हाँ. differentiating with respect to x, तो y square का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा ना. तो इसका इस टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखो, जब हम इंटीग्रेट रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, y वाले टर्म्स को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं. ठीक है. सो Yes, इस ब्रैकेट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन 2x है कि नहीं? Yes. क्या हम 2x को यहाँ पे सेट कर सकते हैं? बताओ. x है ऑलरेडी. Can I set 2x by just multiplying and dividing by 2? Yes, ma'am. ओके, तो कांस्टेंट हमेशा हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं. तो क्या अब मुझे बताओ, क्या मैं ये फॉर्मूला भी यूज कर सकती हूँ? फंक्शन पावर n इंटू एफ डैश का फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ? Yes. क्या होगा बताओ? द आंसर इज फंक्शन पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. सो अगर मैंने इसको यूज किया, व्हाट विल आई गेट? फंक्शन दैट इज x स्क्वायर्ड माइनस y स्क्वायर्ड रेज टू n प्लस 1. क्या होगा? ओरिजिनल पावर था हाफ, प्लस 1 क्या हो जाएगा?
3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा। यस और नो? यस मैम, यस। ओके, सो हमेशा याद रखना, कोई भी पावर फंक्शन पावर n को इंटीग्रेट कर रहे हो, जस्ट सी टू इट कैन आई सेट द डेरिवेटिव ऑफ दैट. If yes, there is no substitution required. You have a direct formula. You get the answer function power n plus 1 upon n plus 1. Now I'm going to simplify this by taking cancelling 2 and 2. I cancelled it out. So क्या बाहर निकलेगा? 1 by 3 हम बाहर निकाल देंगे. 0 to a under root of a squared minus y squared as it is. और अब मैं डाल रही हूँ ये लिमिट्स. अब मुझे बताओ, हम x की जगह पे डालेंगे अपर लिमिट. अगर मैंने x की जगह पे डाला अपर लिमिट, क्या आ रहा है बताओ? Will I get a squared minus y squared raised to 3/2? Yes or no? यस Minus जब हम लोअर लिमिट डालेंगे x के जगह पे तो क्या हो जाएगा? y squared minus y squared 0? Yes or no? मैम कैसे? हाँ, वापस बोलती हूँ. x की जगह पे सी हम लिमिट किसका डाल रहे हैं? x. तो x की जगह पे पहले मैंने अपर लिमिट डाला तो a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा. और बाद में हम x की जगह पे, ये x का लिमिट है, सो मैं x की जगह पे जब मैं y डालूंगी, विल इट नॉट बिकम y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेज यस टू यस 3/2? यस यस दैट यस, इज 0. समझा। अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन? समझ में आया? यस यस ठीक है, ठीक है. सो आई हैव पुट द अपर लिमिट फॉर x and I have put the lower limit for x. So finally what I'm getting is just a product of these two functions. So now when I multiply this, you can see, isn't this same function? Function same होता है तो क्या होता है? जब x रेज टू a इंटू एक्स रेज टू b तो क्या हो जाता है? जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं ना. यस मैम। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है. ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेज टू हाफ प्लस 3/2 क्या हो जाएगा बताओ? 2 यस. ओके, a सो स्क्वायर यू माइनस y कैन स्क्वायर सी अपन। a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया. अब ये हो गया सिंपल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y. यस और नो? So यस I'll मैम, just यस। expand this using the square formula. So it becomes a raised to 4 minus 2a squared y squared plus y raised to 4 dy. And now finish off the integration with respect to phi. So constant ka integration with respect to y is constant into y minus 2a squared as it is. Y squared ka integration ho jayega y cube by 3 और y raised to 4 का integration हो जाएगा y raised to 5 by 5. And we put the limit 0 to a. So if I put the limits, finally I'll get 1 by 3. A substitute करते हैं पहले तो a raised to 4 into a हो जाएगा a raised to 5 माइनस यहाँ पे मैंने अगर a डाल दिया y की जगह पे तो ये हो जाएगा 2 by 3 a raised to 5 और यहाँ पे अगर y की जगह पे a डाल दिया तो हो जाएगा a raised to 5 upon 5. Now 0, when I put 0, all terms are becoming 0. So this is what I get. And now what is common throughout? You can see common throughout is a raised to 5, है ना? So I am taking a raised to 5 common. I'll get 1 minus 2 by 3 plus 1 by 5. Can anyone help me out with solving this? Now the LCM is 15. LCM is 15. So I'll have 15 minus 10 plus 3 upon 15. So क्या आ रहा है बताओ? -12 15 minus 10. What is 15 minus 10? 5. 5 plus 3. 8. है ना? So will I get 8a raised to By 5 45. upon 45? हाँ, 8a raised to 5 upon 45 is the answer. So is the question understood? पहले हमने क्या किया? It was asked to change the order. दिखता है question बहुत difficult, but स्टेप बाय स्टेप करने जाओगे है बहुत सिंपल. यहाँ पे देखो कुछ भी था, इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन नहीं था. सो यू जस्ट हैव टू करेक्टली ड्रॉ द रीजन फ्रॉम द गिवन लिमिट्स. आफ्टर गिवन लिमिट्स you draw the region, you correct the limits, that is you change the limits, change the order. You have to see क्या order दिया हुआ था dy dx, तो change it to dx dy. If the given order is dx dy, change it to dy dx. And once you get the new limits, follow the same procedure that we have done previously in the previous topic. ठीक है, एक बार लिमिट्स मिल गया, यू जस्ट हैव टू सी फर्स्ट रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल मुझे इंटीग्रेट करना है.
जो भी टर्म में वो वेरिएबल नहीं है उसको बाहर ही निकाल दो इंटीग्रेशन के, सो दैट यू डोंट गेट एनी कंफ्यूज. सो यू कैन सी यहाँ पे a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वॉज नॉट हैविंग एनी एक्स टर्म, मैंने उसको पूरा बाहर ही निकाल दिया पहले इंटीग्रेशन. सेकेंड इंटीग्रल से बाहर मत निकालना, पहले इंटीग्रल के बाहर निकालो. एंड देन वंस यू फिनिश ऑफ दिस इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वेरिएबल, and then try to simplify and see what is the remaining term you're having. So you can see how simple term we got, a squared minus y squared whole square. इसको इंटीग्रेट कर दो. डायरेक्ट एक्सपैंड करके कुछ लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने जाते हैं. आई विल टेल यू डोंट इवन गो फॉर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करने जाते हैं तो लिमिट्स चेंज करना भूल जाते हैं, एंड फाइनली यू एंड अप विद अ रॉन्ग आंसर. स्क्वायर तो तुम लोग कर ही सकते हो, स्क्वायर कर दो और फिर टर्म बाय टर्म उसको इंटीग्रेट करके फिनिश ऑफ द आंसर. ओके, क्लियर? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? Yes or no? Yes, ma'am. Understood. Okay, one simple question I'll give, change the order ka. I want you all to please respond quickly so that we can take this up. 4 by 2, 4, and we have e raised to x squared dx dy. Suppose I'm asking you to integrate by changing the order. Change this order. I'm asking you to change the order. So can you tell me what will you do? First of all, you'll have to draw the region. ठीक है, पहले तो रीजन Region. चाहिए. लिमिट्स चेंज करने के लिए हमें रीजन चाहिए. सो रीजन आर इज बाउंडेड बाय व्हाट? टेल मी. पहला वाला लिमिट किसका दिया हुआ है? y is to 0 to y is to 1. हाँ नहीं, ये पहला होता है, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है. तो पहला लिमिट किसका दिया हुआ है? एक्स का ना. सो एक्स X का, इक्वल हाँ. टू 4y, एक्स इक्वल टू 4, and then y equal to 0 and y equal to 1. ठीक है. So you can see this is the lines that are bounding your region. We'll quickly draw these lines. This is x axis, this is y axis. So now x equal to 4y, same way जैसे x equal to y है ना, x equal to 4y is also a line passing through the origin, but अब it won't be dividing your first and third quadrant into equal halves. Instead थोड़ा ऐसा होगा, like this. ठीक है, मतलब जब हम x इक्वल टू y इक्वल टू 1 रखेंगे तो x इक्वल टू 4 होने वाला है. जब हम y इक्वल टू 2 रखेंगे तो x इक्वल टू 8, तो थोड़ा बड़ा है. सो यू जस्ट हैव टू शो इट लिटिल बिट लाइक दिस. ओके, ऊपर. अंडरस्टूड और नॉट? ये लाइन क्लियर है? जैसे y इक्वल टू x होता है, इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन एंड डिवाइडिंग योर quadrant into equal half. क्यों? क्योंकि जब हम x इक्वल टू 1 रखते हैं y भी 1 हो जाता है. x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू. सो दैट इज नॉट द केस हियर. इट इज x इक्वल टू 4y. सो व्हेन आई एम पुटिंग y इक्वल टू 1, x की वैल्यू 4 आ रही है, तो यू कैन सी इट्स टू हाई. x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, sorry, y equal to 2, x equal to 8, y equal to 3, x equal to 12, like this. That is how it is going. So I have drawn x equal to 4y wala line. This is 4y. x equal to 4y. x equal to 4. x equal to 4 कैसे बनेगा? Ma'am, parallel to y on x axis. Yes, yes. X equal to 4 will be parallel to y on x axis. So I've just extended it a bit क्योंकि मुझे x equal to 4 इसको intersect करना है. तो suppose मैंने x equal to 4 यहाँ पे लिया, it will be a line intersecting your x equal to 4y like this. ठीक है, ये हो गया x equal to 4. y equal to 0 क्या है? X axis. Yes, y equal to 0 is x axis. तो ये हो गया हमारा third boundary, and then y equal to 1. Now before I draw y equal to 1, students, I want you to find me this point of intersection. ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन. कैन एनीवन टेल मी, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पे तुम्हारी यहाँ पे डेफिनेटली इस पॉइंट पे x तो 4 होने वाला है ना? x तो 4 रहने वाला है ना ये पूरे लाइन पे. मुझे सिर्फ y कोऑर्डिनेट चाहिए. सो हु विल गिव मी द वैल्यू ऑफ y? यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो. x इक्वल टू 4y और x इक्वल टू 4 का इंटरसेक्शन. y की वैल्यू क्या होगी बताओ? X by 4. नहीं, देखो, एक हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं ना. Yes, substitute one in the other. Either you substitute this हाँ. here. So if I substitute, I'll get 4y equal to 4. So y equal to क्या हो जाएगा? 1 होगा ना? तो यहाँ पे हमें मिल गया. So y equal to 1 line यहाँ पे बनेगी. ऐसा समझ में आया? Yes, This ma'am, is yes. y equal to 1 line. So now tell me,
which will be your region? Again, you can see we are getting two likely regions. So identifying the correct region is very important. Can you tell me which one is your region? X is equal to 4y से x equal to 4 जा रहा है, ऐसा रीजन. Y equal to 0 to y equal to 1, कौन सा रीजन होगा? ये वाला मैम रीजन वो कि ये वाला रीजन? फर्स्ट के सेकंड सेकंड? सेकंड सेकंड, yes. सेकंड वाला Yes, yes. So this one is your correct region. This one. ठीक है? ये ऊपर वाला नहीं होगा, ये तुम्हारा correct region. And now I have asked you to change the order to which order? किस order में चाहिए हमें? फर्स्ट ऑर्डर. हाँ, dy dx में convert करना है, right? So dy dx में अगर convert करना है तो what strip am I supposed to make here? वर्टिकल. Yes, vertical strip. I have to make a vertical strip here. ठीक है, तो मैंने vertical strip बना दिया. Vertical strip बनाने के बाद we have to now find out our new limits. ठीक है, so what is my new limits going to be? Tell me, what is the value of y at the starting point? ये पूरे लाइन पे y की वैल्यू क्या है? पूरे लाइन पे मैम जीरो ही है ना? जीरो. Yes, zero. Very good. And what is the value of y at on this line जहाँ पे वो बाहर निकल रहा है? What is the value of y? कौन सी मैम? इस लाइन पे जहां से तुम्हारा स्ट्रिप बार खत्म हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रिप खत्म हो रहा है ना? सो Four, या four. इस वन मैम, वन. नहीं, वन तो यहाँ पे है. ये पूरे लाइन पे y की वैल्यू क्या है? x डिवाइड बाय 4. यस, समझ में आया सबको? y इक्वल टू 1 तो सिर्फ इस पॉइंट पे. यहाँ पे y इक्वल टू 1 है, यहाँ पे y इक्वल टू 1 है. बताओ मुझे, होगा क्या वहां पे y Yes, इक्वल टू ma'am, 1? yes, तो हमें ऐसा वैल्यू लेना है जो इस पूरे लाइन को कवर करे. ठीक है, सो इसलिए हम क्या करते हैं? वी गेट इट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द लाइन. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y ऑन दिस लाइन? इट इज x by 4. ये समझ में आया सबको लिमिट्स y की? yes, ma'am. यस मैम. Okay, and what is the minimum value of x in this region? Tell me, what is the minimum value of x in this region? Minimum value? Zero. 0. And what is the maximum value of x in this region you see? 4. 4. Yes. So you got your new limits. And now we are going to integrate the same function with respect to our new limits. Okay. We are not going to change the function, but we are only going to change the limits for this function. So the function was, I'll just rewrite it here. Yes. So I is equal to, we have to now double integrate e raised to x squared with the order dy dx, and the limits for y is 0 to x by 4 and the limits for x is 0 to 4. So now when I'm integrating with respect to y first, what will be treated as a constant? ये पूरा term ही constant है because I'm integrating with respect to y. Yes or no? Yes. Yes, ma'am. So if is there any term of y here? Is there any term No. of y? No. So we'll integrate 1 with respect to y. What is integration of 1 with respect to y? Y. Y, yes. Y. And I put the limits for y 0 to x by 4 and my first integration is over. Okay, so we'll just simplify this by putting the upper limit and the lower limit. So when I substitute the upper limit, I'm going to get x by 4 minus the lower limit 0 and dx. Okay, so after simplifying, you can see I'm going to get x by 4 here. So मैं 1 by 4 को बाहर निकाल रही हूँ, and I can write this as e raised to x squared into x dx. Is this what I'm getting? Yes, ma'am. Yes मैम. अब इसको हमें इंटीग्रेट करना ना, ये भी बहुत ही व्हाट इज ऑफन यूज्ड फॉर्मूला होता है. नाउ रिमेंबर, कभी भी तुम्हें e रेज टू कोई फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो तो तुम्हें देखना है कि क्या उसके साथ उसका डेरिवेटिव, ये पावर का डेरिवेटिव सेट हो सकता है कि नहीं. अगर इस पावर का डेरिवेटिव सेट हो गया तो इसका आंसर है डायरेक्टली e रेज टू f ऑफ x इटसेल्फ. ओके, सो नाउ टेल मी, यहाँ पे e रेज टू क्या है स्टूडेंट्स? x square. x स्क्वायर. क्या होगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव? 2x. e raised to 2x. 2x. है ना? e रेज टू नहीं, देखो
फंक्शन सिर्फ हम वो Okay. पावर को ले रहे हैं, ई को नहीं लेना है। सो क्या है ये फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स, क्या हो रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्या होगा उसका एफ डैश 2x. 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 So can I set 2x here? Can I set 2x here? Yes, ma'am. Divided by 2. Yes, very good. Multiply and divide by 2. Divided by 2. है ना? So क्योंकि e raised to f of x था, how am I going to integrate it? By setting its derivative along with it. So मैंने कैसे set किया? इसका derivative था x 2x था, सो यहाँ पे ऑलरेडी x प्रेजेंट था, मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया, सो अब बाहर हो गया 1/8. सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस e रेज टू f ऑफ x इनटू f डैश का इंटीग्रेशन क्या है? क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? e रेज टू X square. यस, ये हो गया इंटीग्रेशन विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन. सो तुम अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज याद रखोगे ना, सब्स्टिट्यूशन हर जगह करने की कोई जरूरत नहीं है. डोंट, क्योंकि क्या होता है सब्स्टिट्यूशन करते वक्त या तो कहीं पे तुम कुछ भूल जाते हो या तो लिमिट्स चेंज करना भूल जाते हो. ये सब अगर तुम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ही यूज करोगे ना, हाफ ऑफ योर टाइम इज सेव्ड देयर ओनली. No need of wasting time in making substitution x squared equal to t and then change the limits and then go for integration. Not required. Here we had a standard formula e raised to f of x into f dash, which is e raised to f of x. So I just use that formula. I directly got the answer. The answer is e raised to x squared. Now what is remaining is just substitute the limits. Okay. So instead of x, we just have to substitute the upper and the lower limit. So come on, tell me, what will I get if I put the upper limit? X के जगह पे 4 डालेंगे तो क्या आएगा? 8. E raised to 4 squared. E What is 4 squared? 4 8 16. 16 माइनस, अब यहाँ पे ये गलती करते हैं, अगर मैंने x की जगह पे 0 डाला, सो व्हाट इज e raised to 0? 1. 1. 1. So this is the answer. Don't take e raised to 0 as 0. Every time putting 0 is not 0. So you have, this is your final answer. Clear or not? Yes. Okay. Everyone understood? Change the order. So first of Yes, all, ma'am. from the given limits, draw the region. After drawing the region, identify the correct region. And after identifying the region, you have to see what strip are you supposed to make. What is the given order और आपको किस order में change करना है. Correct strip बनाओ, correct limits निकालो और फिर integrate the same function with respect to that limits. Now, one more important point that I want to say is changing, converting into polar. Now, you know, converting to polar बहुत ही important है, क्योंकि जब आप ट्रिपल इंटीग्रेट में भी ट्रिपल इंटीग्रेशन भी करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम यू एनकाउंटर अ सर्कल. सो सर्कल आने पे आपको क्या करना है? यू हैव टू ऑलवेज कन्वर्ट इनटू पोलर सो दैट हाफ ऑफ योर वर्क इज रिड्यूस्ड. Okay, so remember, any polar curve you have, you circle you have, make sure that you convert into polar. Okay, so we'll just take two questions on polar also, so that concept is also clear. Okay, and then we can conclude. Okay, so converting into polar, converting to polar. Converting into polar में, how do we convert from Cartesian to polar? Do you remember the conversion formulas? X is equal to क्या डालना है हमें? R cos theta, y is equal to क्या डालना है हमें? R R sin sin theta, and dx dy हमें क्या डाल देना है? Directly r dr d theta. Now most of the students forget this r and then have a wrong answer. So remember, x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, and dx dy को आप replace कर दोगे by r dr d theta. दूसरी बात, लिमिट्स कैसे निकालेंगे आप? कोई भी पोलर रीजन में if you want to get the limits for r and theta, make sure that you make a radial line starting from the origin towards the region. So this value of r at the starting point and the value of r at the end point, this will give you the limits for r. And then theta क्या होता है? इस रेडियल लाइन को आप कहां से कहां रोटेट करोगे तो पूरा रीजन कवर हो जाएगा. So that will give you the limits for theta. Now suppose my entire region is r and I am giving you this circle as r equal to a. So can anyone tell me what will be the limits for r here? R की limit क्या होगी? It is starting from, what is the value of r at the origin? 0. Radius क्या होगा origin पे? 0 होगा. 2.
What is the value of r when it is going out? Is point pe. What is the value of r? A. A. So this becomes your A. Now, my region is this entire circle, पूरा circle. So you tell me इस radial line को मैं अगर x axis से start करूँ rotate करना, so x axis पे angle of rotation क्या होता है? 0, 2. ये पूरा region अगर मुझे cover करना है तो पूरा one entire rotation करना पड़ेगा मुझे starting from x axis to back to x axis. So what will be the angle of rotation for theta, students, here? 0 to 2 pi. 2 pi. 2 pi. Yes. One entire rotation. Suppose I only give you upper half region, that is r equal to a ka upper half region like this. So what will be the angle of rotation in that case? Pi. Yes, theta equal to 0 to theta equal to pi. And suppose you have the region only in the first quadrant. Then what will be the angle of rotation for theta? 0 to pi by 2. Yes, the limits for r will remain same 0 to a, but the limits of theta you should remember it's going to be only 0 to pi by 2. Okay, now this is for a circle when their center is at origin. But sometimes you encounter circles that are not having center at origin और वहां जाकर तुम लोग गड़बड़ करते हो. So one such common example is r equal to a cos theta and r is equal to 2a cos theta. Okay, these are very most common encountered circles which are not having center at origin. So the moment you don't have center at origin, you people make mistake in the limit. So I'll just show you what are these circles. Suppose I take r equal to a cos theta. ये क्या होता है? Actually, this is the Cartesian equation of this circle. ये r equal to a cos theta का Cartesian equation है ये. So इससे मिलता है आपको, क्यों? क्योंकि जब आप पोलर में इसको कन्वर्ट करते हो, इस Cartesian equation को पोलर में कन्वर्ट करते हो, याद रखना पोलर में जब कन्वर्ट करते हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्टली किससे रिप्लेस हो जाता है? r स्क्वायर से. यस और नो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किससे रिप्लेस हो जाता है? आर स्क्वायर. क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या होगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर. वाई स्क्वायर क्या होगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर. आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाता है? आर स्क्वायर. सो जब मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर डालती हूँ, a as it is because it is a constant, और x की जगह पे r cos थीटा रिप्लेस करती हूँ, एक r कैंसिल होने पे हमें क्या मिल जाता है? डोंट आई डू आई गेट r इक्वल टू a cos थीटा? यस और नो? Yes or no? Yes, ma'am. So now can anyone give me what will be the Cartesian equation of this circle? Can anyone tell me इससे इसका Cartesian equation क्या होगा? जैसे मैंने इसका Cartesian equation ये लिखा, r equal to a cos theta in xy is written as x squared plus y squared equal to ax. r equal to 2a cos theta कैसे लिखा जाएगा Cartesian में? x squared plus y squared is equal to 2x. 2ax. Yes. Okay, so these are the most common encountered circles you have. X squared plus y squared equal to ax and x squared plus y squared equal to 2ax. Okay, now how to draw them I'll show you. Now r equal to a cos theta is a circle with center at a by 2 comma 0. So this is your r equal to a cos theta wala circle. So you can see this is the circle which is not having center at origin. Unlike r equal to a, r equal to 1, r equal to 2. These are all circles with center at origin. But the moment I give you r equal to a cos theta, r equal to 2a cos theta, जहां पे भी cos आएगा ना, रिमेंबर उस सर्कल के सेंटर हमेशा x एक्सिस पे लाई करेंगे, और जहां पे भी साइन आएगा ना तो उस सर्कल्स के सेंटर हमेशा y एक्सिस पे लाई करेंगे. So here this is your r equal to a cos theta having center at a by 2 comma 0. a cos theta का सेंटर है a by 2 comma 0. So can anyone give me what will be the center of r equal to 2a cos theta? r equal to 2a cos theta का सेंटर क्या होगा? A comma 0. Yes. So you will have to draw a bigger circle with center a comma 0 like this. Understood or not?
This is going to be, this bigger circle is r equal to 2a cos theta, and this smaller circle is r equal to a cos theta. Is this understood to everyone? Yes or no? बोलो, समझ में आया कि नहीं? Yes. Yes, ma'am. Okay, so most of the time r equal to a cos theta और 2a cos theta को भी सेंटर एट ओरिजिन बना देते हैं, इसलिए मैंने ये स्पेसिफिकली बताया ये कि a cos theta हो और 2a cos theta हो, remember you have to make those circles with center at like respective points. आप a cos theta हो तो a by 2 comma 0 होगा, 2a cos theta होगा तो a comma 0 likewise. So this will be your circle like this. ठीक है, सेम वे अगर मैंने तुम्हें दे दिया a sin theta, r equal to a sin theta, can anyone tell me इसका सेंटर कहां पे आएगा? A by 2. 0 कॉमा a by 2, मतलब यहाँ पे y एक्सिस पे, ठीक है, ऐसे आएगा, क्योंकि साइन थीटा है ना, तो सेंटर कहां पे लाई करेगा? y एक्सिस पे लाई करेगा, तो तुम्हारा सेंटर फॉर दिस सर्कल विल बी 0 कॉमा a by 2, अनलाइक a cos थीटा तो a by 2 कॉमा 0. अब मुझे बताओ r इक्वल टू 2a sin थीटा कैसे ड्रॉ करेंगे? क्या होगा इसका सेंटर? 0 comma. यस, लाइक दिस, ऐसा. समझ में आया ना अभी? Yes. Okay, so remember, if you are having circle के equation में sin, the center will be on your y-axis, and if you are having circle equation with cos, then the center is going to be on your x-axis. ठीक है, so we'll quickly see just a question wherein you can convert into polar and find the limits for this region. Okay, so then most of the part for this particular unit would be completed. Okay, let me take a question. Question number 1. Suppose I give you double integrate y squared dx dy over region R, where R is outside x squared plus y squared equal to ax and inside x squared plus y squared equal to 2ax. Okay, suppose this is the question. So now we already saw what is x squared plus y squared equal to ax. What is that? What is this? A cos theta. R equal to a cos theta, right? Circle with Yes. center at a by 2 comma 0. And what is the second one? That is the circle with center at a comma 0. So we will have a circle like this in that case. Okay. So if this is the circle, now, so when I say outside the inner circle and inside the bigger circle, so you can see, will this be a region जहाँ पे मुझे इस function को integrate करना है? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, Yes, so ma'am. now this is the region where I want to integrate my function. Okay, so if I want to integrate my function here, we'll have to first get the limits for r and theta. Now I told you, whenever your region is a circle, always convert into polar. That is going to make your task simpler, very much simpler. So if I want to convert into polar, मुझे limits किसकी चाहिए? किसके लिए limits ढूंढने पड़ेंगे हमें? r and theta के, yes or no? r and theta के लिमिट्स हमें चाहिए. So वो कैसे मिलेंगे? You will have to make a radial line starting from the origin towards the region. Find out what is the value of r when it is entering and find out what is the value of r when it is leaving. So can you tell me what is the polar equation of the inner circle? इसका polar form में क्या होता था? मैंने बताया था polar form में ये हो जाता है r equal to a cos theta. और इस circle का polar equation क्या है बताओ? r equal to 2a cos theta. 2a cos theta. 2a cos theta. है ना? So you tell me what is the value of r on this circle and what is the value of r on this outer circle. That will give me the limits. So what is the limit for r? Tell me. मैम अंदर वाले सर्कल पे a है और बाहर वाले नहीं, a सर्कल नहीं है, a नहीं है. क्या होगा? a cos theta होगा.
हाँ समझ एक में? और ये डिफरेंस है। अगर सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन है ना, तो आर की वैल्यू थ्रू आउट सेम रहती है ऑन द बाउंड्री, जो तुम्हारा रेडियस है। बट यहाँ पे यू कैन सी, इफ दिस इज योर सर्कल, कैन यू टेल मी यहाँ पे जो तुम्हारा आर की वैल्यू वो सेम यहाँ पे भी होगी? डिस्टेंस दिख रहा है तुम्हें? अलग हो रहा है ना? सो आर की वैल्यू यस कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती ऑन द सर्कल्स वेयर द सेंटर इज नॉट ओरिजिन। सो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी सर्कल पे? ए कॉस थीटा। तो वो एंगल के हिसाब से चेंज होता रहेगा आर की वैल्यू। समझ में आ रहा है ये? यस मैम ओके। 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एट द आउटर सर्कल? इस पे आर की वैल्यू क्या होगी? 2a cos थीटा यस। सो ये चीज याद रखनी है सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड सर्कल विद सेंटर एट अदर देन ओरिजिन के लिए। आर की वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट व्हेन योर सेंटर इज नॉट एट ओरिजिन। यहाँ पे वो चेंज होता जा रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वो चेंज होता रहता है आर की वैल्यू। सो वो एंगल पे डिपेंड करता है, और वो कैसे हम ढूंढेंगे? फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इटसेल्फ। सो आर इक्वल टू ए कॉस थीटा वाले सर्कल से जा रहा है वो आर इक्वल टू 2a कॉस थीटा वाला सर्कल। ये समझ में आया आर की लिमिट सबको? यस ओके। अब मुझे बताओ थीटा की लिमिट क्या होगी? मतलब ये रेडियल लाइन हम ज्यादा से ज्यादा यहां से शुरुआत करते 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 हम कवर करते 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 यहां तक जाएंगे। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द लिमिट्स फॉर थीटा हियर? -3 π/2 2 π/2 -3 π/2 वो होता है 3 π/2। थ्री बट पाई थ्री बाई टू पाई बाई सॉरी टू को हम कैसे लिखते हैं? -π/2 भी लिख सकते हैं, राइट? सो आई कैन से इट इज -π/2 टू +π/2। समझ में आ रहा है? -π/2 टू +π/2। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस मैम ओके, लिमिट समझ में आया सबको? यस Okay, okay. So now I'll just integrate my function by converting into polar. So function था y squared। मुझे बताओ अगर y squared को मुझे पोलर में कन्वर्ट करना है तो y को हम क्या रिप्लेस करेंगे? y को हम क्या रिप्लेस करते हैं पोलर में? r sin थीटा ना? यस सर यस। और dx dy को किससे रिप्लेस करते हैं? dx dy को किससे रिप्लेस करते हैं? r dr d theta, yes or no? X will be replaced by r cos theta, y will be replaced by r sin theta, and dx dy will be replaced by r dr d theta. So here there was no x, only y. So I replaced y by r sin theta square. Dx dy was replaced by r dr d theta. I substitute the limits of r as a cos theta to 2a cos theta and -π/2 to +π/2. Okay. So now we'll finish off the integration after simplifying. So what I'll do is -π/2 to +π/2, a cos theta to 2a cos theta, and I'll just simplify this function. यहाँ पे r squared और ये r मिलाकर हो रहा है r cube and sin squared theta dr d theta. So tell me for the first integration, what will remain constant, students? For the first integration, what is going to remain constant? पहला इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल है? मैम साइन sin स्क्वायर थीटा हाँ, सो साइन स्क्वायर विल बी केप्ट एज sin square theta कांस्टेंट, गुड। एंड आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा रिस्पेक्ट टू आर? r⁴/4 Yes, r is to 4/4. Very good. So a cos theta to 2a cos theta will finish off with respect to r, and now we'll be simplifying respect to theta. So पहले तो मैं constant बाहर निकाल देती हूँ, 1/4 मैंने बाहर निकाल दिया है. So I'll left out with -π/2 to π/2 sin squared theta, and now I put the upper limit. Now instead of r, when I put 2a cos theta, it becomes 2a cos theta power 4. क्या मिलेगा बताओ? 2 raised to 4 is 16, a raised to 4 cos raised to 4 theta minus, अब r के जगह पे डालेंगे हम a cos theta, so a cos theta पावर 4 क्या हो जाएगा?
बोलो a raised to ये स्टूडेंट्स a cos theta power 4 क्या हो जाएगा a raised to 4 cos raised to 4 theta d theta yes or no Yes, ma'am. yes so now 16 a raised to 4 cos raised to 4 minus a raised to 4 so will I get 15 here 15 by 4 Yes, common ma'am. निकल जाएगा and we'll have minus pi by 2 to plus pi by 2 sin squared theta into cos raised to 4 theta d theta अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है हमें so what do I see here is both sin and cos are having even power है ना ये इवन फंक्शन हो गया कॉस इवन है साइन साइन ऑड है बट साइन को मैंने इवन पावर दिया हुआ है सो ये अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट एक इवन फंक्शन हो जाता है सो माइनस ए टू ए आप लोगों ने ये 10 11th 12th में पढ़ा होगा माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर ये इवन फंक्शन हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं यस और नो Yes, ma'am. So therefore, this becomes 15 by 4 into 2 times 0 to pi by 2. And now we'll have sine square theta cos raised to 4 theta d theta using the reduction formula which you have already studied now. So if I solve this further and use my reduction formula. So how do I use your reduction formula? Tell me. ये m होता है, ये n होगा. So use the reduction formula m minus 1, 1. N minus 1, 3, go on taking difference of 2, 2 till we end up at 2 and 1. And नीचे होगा m plus n that is 6, 4, 2. And because both are even, we multiply by pi by 2. So this is your final answer. We'll just simplify this. Whatever getting cancelled, we'll cancel it out. So 3 2s are 6. We are having 15 pi upon this 2, 8, 16, 32, 64. This is what your answer is. 15 pi upon 64. Understood or not, students? Yes. Okay? Clear? So now एक और क्वेश्चन Ma'am. में ले हाँ बोलो बोलो अगर लाइक हम लोग इस क्वेश्चन में हम्म लाइक अगर हम लोग रिडक्शन फार्मूला तक नहीं जाए मतलब अपना फाइनल आंसर नहीं आए सिर्फ तो मैम उसका मतलब क्या फिर मतलब डिडक्शन कितना होगा यहाँ पे मैंने क्या बोला देखो यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू आर ठीक है सो मैंने कहा लिमिट्स ये इसके रीजन के मिल जाएंगे तुम्हें 2 मार्क्स लिमिट्स के मिलाकर 3 फिर यू हैव टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वेरिएबल व्हाट इज द फर्स्ट वेरिएबल आर सो इफ यू सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड रिस्पेक्ट टू आर ठीक है एंड देन दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग ये स्टेप पे पहुंचोगे आफ्टर फिनिशिंग ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू आर सो कितने मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें यहाँ तक 4 मार्क मिल जाएंगे आउट ऑफ 6 तो यू विल गेट ना 4 मार्क्स ओके ओके मैम हाँ एंड देन फाइनली अब यहाँ पे जाकर तुम सेकेंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो सो इफ एनीवन कंप्लीट्स द इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू द सेकेंड वेरिएबल ठीक है दैट इज यू आर पुटिंग ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस फॉर्मूला एंड यहाँ पे भी कर लेते हैं तो हम लोग फिर एक और मार्क देते हैं 5 फिर जाकर कुछ लोग क्या करते हैं ये स्टेप में भी जाकर गलती करते हैं कटिंग में एंड ऑल सो हम लोग सिर्फ एक मार्क कैंसिल करेंगे इन दैट केस फॉर द फाइनल आंसर अगर यहाँ पे कुछ गलती हुई है बट आप लोगों ने ये करेक्ट लिख दिया यहाँ तो एक और मार्क मिल जाएगा दैट इज यू हैव कंप्लीटेड द इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू द सेकेंड वेरिएबल ऑल्सो करेक्टली ओके एंड फाइनल आंसर में ही सिर्फ गड़बड़ हुआ है तो सिर्फ एक ही मार्क कट होगा बाकी 5 मार्क एज इट इज मिल जाएंगे ठीक है ओके यस मैम so every successful step integrated you will get a mark so मैं बोल रही हूँ अगर एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर दिया तुम्हें उसके मार्क्स मिल जाएंगे लाइक दैट सो स्कीम वैसे ही रहेगा हर स्टेप के लिए करेक्ट इंटीग्रेशन के लिए यूल गेट मार्क्स नाउ मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ मुझे सिर्फ आप लोगों की तरफ से तुम लोग को ये समझ में आया कि नहीं लिमिट्स ऑफ आर चाहिए ओके एंड देन यू कैन solve that on your own okay so my question is question number 2 suppose I ask you to integrate x squared y squared dy dx
over region R, where R is the positive quadrant of the circle x squared plus y squared is equal to 4. ये एक है और मैं एक और इसमें पार्ट चेंज करूंगी. तो मुझे बताओ ये कौन सा सर्कल है यहाँ पे? Which circle is this when I say x squared plus y squared equal to 4? This is a circle with center what? This is a Ma'am, circle. हाँ. sin Origin, theta. ma'am. Origin. Origin. And Origin. radius what? Radius 2, ma'am. 2. 2. Yes, like this. And what is your region R? What is your region R? Positive quadrant of the circle. मतलब यहाँ पे कौन सा region मुझे लेना है? Upper wala, ma'am. First. Only first quadrant. Yes or no? Only the region that is lying in the first quadrant. So ये बन गया तुम्हारा region R. It is R is the positive quadrant of this circle. It is saying. So this will be your region R. Now help me to get the limits now. If you want to integrate the function, 0 to what will pi be the by 2. limit? R equal to R की limit क्या होगी? 0 to Pi by 2. नहीं R की लिमिट 0 to यहाँ पे R 0 to क्या 2. होगा? 2. 2. यस. क्योंकि इसका पोलर इक्वेशन अगर तुम निकालने जाओ ना, मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाता है पोलर फॉर्म में? आर स्क्वायर है ना. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पोलर फॉर्म में आर स्क्वायर है. तो आर स्क्वायर अगर 4 है तो आर इक्वल टू क्या हुआ? 2. सो यू कैन सी दिस, इसका पोलर इक्वेशन आर इक्वल टू 2 है. कहीं पे भी ऑन दिस बाउंड्री रेडियस क्या होने वाला है? 2, क्योंकि सेंटर एट ओरिजिन है. सो आर की लिमिट क्या होगी बताओ मुझे? 0 to 2. 2. और थीटा की लिमिट क्या होगी? 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 बिकॉज ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट है. अब मैं यहाँ पे एक स्लाइड चेंज करने वाली हूँ. आई एम चेंजिंग द रीजन नाउ. द क्वेश्चन इज ऑल सेम बट नाउ आई एम गिविंग यू सर्कल एज x squared plus y squared equal to 4x. Can you tell me what circle is this, students? 2a cos ये theta. 2a cos a नहीं है यहाँ पे. बताओ मुझे इसका पोलर इक्वेशन क्या होगा बताओ. 2 cos theta. हाँ, this is r is equal to not 2 cos theta, actually 4 cos. I'll tell you how to do it. X squared plus y squared in polar will be replaced as R square. r squared. 4 as it is, x is replaced as R cos theta. yes. So just cancel one r. Cancel one r. What is the polar equation you are getting? R is equal to Cos theta. 4 cos theta. 4 Yes or cos no? theta. So x squared plus y squared equal to 4x का पोलर इक्वेशन क्या है? 4 cos theta. अब इसका सेंटर क्या होगा? 4 cos theta का सेंटर क्या होगा? आधा. याद है a cos theta था तो उसका सेंटर क्या था? a/2. तो 4 cos theta का सेंटर क्या होगा? क्या होगा सेंटर इस सर्कल का? 2. Yes, 2,0 will be the center. And because it is cos, the center is on x-axis. Will I draw a circle like this, students? Understood or not? Is this understood? Yes, x ma'am. squared plus y Yes, squared yes. equal to 4x. तो अगर मैंने एक x डाल दिया यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? सेंटर शिफ्ट हो जाता है. It is r equal to 4 cos theta. And remember जब हमने r equal to a cos theta लिया था, मैंने क्या बोला था? इसका सेंटर है a/2,0. तो अगर 4 cos theta है तो सेंटर क्या हो जाएगा? 2,0. सो ये हो जाएगा तुम्हारा सर्कल इन दैट केस. और मैंने बोला है पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल. सो यहाँ पे मैं कौन सा पार्ट कंसिडर करूंगी? द सर्कल, द पार्ट ऑफ द सर्कल दैट इज लाइंग इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट. तो कितना पार्ट लू मैं यहाँ पे? Upper part? The upper first quadrant. हाँ. Yes. Only the part of the circle that is lying in the first quadrant. Positive quadrant means first quadrant जहाँ पे x and y दोनों पॉजिटिव होते हैं. ठीक है. अब मुझे बताओ यहाँ पे r की लिमिट क्या होगी? If I make a radial line, come on, tell me what will be the limits of r here?
I just wanted to show you the difference between both the circles. Yes. So limits. R is starting from, what is the value of R Zero. at the origin? 0. 2. What is the value 4. of R at the boundary? Is it going to be a constant value now? No. No, ma'am. No. So tell me, what is the value of R on the boundary of the circle? 4. Mm-hmm. R की वैल्यू क्या होगी on the circle? 4 cos theta. Yes. 4 cos theta. क्योंकि 4 सिर्फ यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स. यहाँ पे 4 दिख रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे R की वैल्यू 4 होने वाली है थ्रू आउट ऑन द बाउंड्री? नो. Unless you don't have circle with center at origin, the value of R, see यहाँ पे क्योंकि center origin में है तो radius, ये थ्रू आउट रेडियस ही होगा बाउंड्री पे, तो यहाँ पे तुम्हारी R की वैल्यू कांस्टेंट रहती है बाउंड्री पे, इसलिए R इक्वल टू 0 टू R इक्वल टू थीटा 0 टू. अगर सेंटर ओरिजिन पे तुम्हें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी लिमिट सिंपल है 0 टू जो तुम्हारा रेडियस ऑफ सर्कल है. बट अगर 4x है 4y है तो इन दैट केस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि R की वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट ऑन द बाउंड्री. It is continuously changing. So therefore, here the value of R will depend on the equation of the circle. And what is the equation of the circle here? What is the equation of the circle here? R equal to what? 4 cos theta, na? Yes or no? Yes or no, students? What is Yes, the ma'am. value Yes, of ma'am. R? The value of R on this circle. This is the equation of the circle. यहाँ पे what is Yes. the value of R on the circle? R equal to 2 वाला circle है, इसलिए वो 2 ही है थ्रू आउट. बट यहाँ पे R equal to 4 cos theta होगा, तो वो सारे वैल्यूज ऑन द सर्कल कवर कर लेगा. एंड व्हाट विल बी द एंगल? टेल मी. मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है y एक्सिस, तो व्हाट इज द एंगल? From x to y. So theta equal to 0 to I. pi by 2. पाई तो मतलब इधर भी आएगा, इधर है रीजन, ये है हमारा थीटा इक्वल टू पाई, है ना? क्या हमारा रीजन यहाँ पे है? 0 टू पाई जाने की जरूरत है. कहां तक जाएंगे हम? सिर्फ x टू Pi by 2 तक. y, तो 0 टू पाई बाई 2 आएगा ना? क्लियर हुआ ये? Yes. अंडरस्टूड एवरीवन? अगर इसके जगह पे मैंने दे दिया होता x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y, तुम बता सकते क्या बनेगा सर्कल इन दैट केस? 4 sin This- theta. हाँ, r इक्वल टू 4. तब आपका सर्कल यहाँ पे ऐसा r इक्वल टू, ऊपर साइड. हाँ 4 साइन थीटा यहाँ पे. ठीक है, तो तुम देख सकते हो रीजन यहाँ पे भी लाई कर रहा है. बट तब जाके तुम्हारी लिमिट्स क्या होगी? 0 टू 4 साइन थीटा एंड थीटा विल बी 0 टू पाई. Pi by 2. नहीं, तभी हाँ, ये pi. यहाँ पे भी है ना Pi रीजन. by 2 ना मैम. हाँ हाँ, अगर Positive सिर्फ region फर्स्ट है ना. क्वाड्रेंट, हाँ हाँ पॉजिटिव क्वाड्रेंट ले रहे तो ये, लेकिन मैं बोल रही थी अगर ये रीजन पूरा ले तो तुम देख सकते हो अब तुम्हारा रीजन यहाँ पे लाई कर रहा है तो तब जाके पाई आएगा. बट यहाँ पे तो हमारा रीजन ही नहीं था ना, तो पाई तो आएगा ही नहीं. समझ में आया? सिर्फ x टू y, दैट मीन्स 0 टू पाई बाय 2. लिमिट्स क्लियर हो गई? ओके. Yes मैम. Okay, and then I hope you, एक बार लिमिट्स आ गए तो then you know how to integrate the given function. आपको पोलर में कन्वर्ट करना है by putting x is equal to r cos theta and y equal to r sin theta. तो यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन था डबल इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर्ड y स्क्वायर्ड dx dy. So मुझे बस बताओ कन्वर्टिंग टू पोलर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर्ड क्या हो जाएगा? r स्क्वायर्ड r cos sin- स्क्वायर्ड, है ना? हाँ, r square cos square and r और- square sin square. यस, r dr स्क्वायर d sin theta. स्क्वायर. नहीं, dr d theta, dx dy will be replaced by R theta. यस. ये भूलना नहीं, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स RDR. भूल जाते हो जैसे आर का पावर चेंज हो जाता है. ठीक है, सो अब ये अगर सिंप्लीफाई किया तो हमारा फंक्शन r रेज टू 5 cos स्क्वायर sin स्क्वायर dr d थीटा. अब इनमें से जो भी तुम्हें रीजन लेना है तुम बस उसके लिमिट जो हमने डिस्कस किए वो डाल के इंटीग्रेट कर लो. ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Okay, so this is what I plan to discuss today, that is डबल इंटीग्रल में हमने रीजन से कैसे निकालने लिमिट्स,
change of order. This will be the main topics. Okay. Then what we are deciding is at least study these 3 topics from this particular entire unit. Okay. So maximum points you can cover it. Just focus on these 3 points. So I don't want you all, क्योंकि ये remedial है, I don't want to study the entire unit and waste your time. Few points, but focus it better. ठीक है, उस पे ज्यादा प्रैक्टिस, और so that you can ये अगर क्लियर हो गया तो डेफिनेटली ट्रिपल भी क्लियर होना ही है। तो ये समझ में आया, आज हमने जो 3 पॉइंट्स लिए वो सब कुछ क्लियर हुआ, रोज कर्व भी। यस मैम। ओके ठीक है। अब हमारे पास, हमें ये लास्ट सेशन दिया था, मुझे हम लोगों ने बोला था मैम को 6 तो चाहिए 3 यूनिट कवर करने के लिए, बट हमें 4 ही दिया है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट यूनिट है हमारा एप्लीकेशन, जिसमें हमारा एरिया, वॉल्यूम, सीजी और एमआई होता है। तो अंडर म्यूचुअल कंसिडरेशन, तो क्योंकि मैम ने भी बोला थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स कम कर दो तुम्हारे, तो वी आर प्लानिंग टू ड्रॉप मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इज दैट ओके? Is that okay, students? One topic in application will be dropped, that is moment of inertia. Or you want all 4 topics? Tell me. Okay, ma'am. So 3 topics are okay? Out of 4 applications, that is just focus on 3 applications. Area, volume and 3 CG. applications are okay. ओके ओके ठीक है ठीक है। सो यहाँ पे भी तुम्हारे कम ये 3, ये वाले यूनिट में तुम ये वाले 3 टॉपिक्स पे कवर करोगे। दैट इज रीजन दिया हुआ है, लिमिट कैसे निकाल के इंटीग्रेट करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर एंड कन्वर्जन टू पोलर। ठीक है। फर्स्ट वाले में भी मैंने बताया कर्व ट्रेसिंग में क्या करना है, कार्टेशियन एंड पोलर, और उसमें भी कौन से कर्व्स कैसे करना है वो बताया। एंड एप्लीकेशन में यू विल ओनली फोकस ऑन एरिया, वॉल्यूम एंड सीजी। ठीक है। अब बाकी वाले टॉपिक्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट वो और में आएंगे। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ सकता है, बट वो एक आध में और में आ सकता है। बट अगर तुम लोग ये टॉपिक्स कर लोगे तो मैक्सिमम तुम्हारा कवर हो जाएगा। ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इसका जो रिकॉर्डिंग है एरिया वॉल्यूम, बिकॉज वी डोंट हैव अ सेशन, इफ यू वांट यू कैन टेल मी कभी मैं सेशन ले सकती हूँ तुम लोगों का। अगर नहीं तो मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल करवा देती हूँ फॉर द एप्लीकेशन वाला पार्ट। व्हाट डू यू से? नहीं मैम, लेक्चर ही रखते हैं। लेक्चर अभी तो रखेंगे? प्रोबेबिलिटी का भी वीडियो लेक्चर ही है। हाँ मतलब उसका भी रिकॉर्डिंग ही है, प्रोबेबिलिटी का भी। अच्छा, तो दो वो सब्जेक्ट इसलिए ना, क्योंकि इन लोग ने हमको दिया नहीं। अब तुम लोग बता दो मुझे, ये वीक में मैं कभी भी फ्री हूँ तो मुझे बताओ, कोई और तुम्हारा लेक्चर हैम्पर नहीं होना चाहिए। सब लोग मिलके बताओ व्हेन कैन आई टेक ऑन, विल टेक जस्ट कवर